400 करोड़ की नेट वर्थ एक डॉक्टर की कैसे बन सकती? मेरी 400 से ज्यादा है। आजकल छोटे गांवों में भी रिस्पेक्ट है, लेकिन बंबई में डॉक्टर हो यानी तुम कुछ तो क्रिकेट करते ही होंगे। फिर क्या हो गया, ये सब मिडिल मैन आने लग गए। तुम मुझे कट दोगे तो मैं तुमको पेशेंट भेजूंगा। आई टेल ऑल माई पेशेंट्स आई एम गोइंग टू यूज यू एज एन अनपेड रिसर्च असिस्टेंट। जब तुम डॉक्टर बन जाते हो ना तो तुम काफी एरोगेंट हो जाते हो। That is, I think, what is wrong with IVF because people are desperate and some of us are taking advantage. I'm not God. I'm not a mind reader. I'm not a fortune teller. I can't tell you what's going to happen. 12 years of schooling just kills all your initiative, all your innovation, all your creativity. Schooling system इतनी broken क्यों है? क्योंकि मकौले ने schooling system इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस की? वो बच्चों को सिखाना नहीं चाहता था, वो ब्रिटिश राज के लिए क्लार्क्स क्रिएट करना चाहता था। What is your advice to somebody who's a first generation doctor and who wants to be successful? समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसके भी अपराध। हम सब अपने रोजमर्रा की जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं जो गलत हैं, बट कभी बोल नहीं पाते। अगर बोल भी पाते हैं तो सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं डाल पाते। आज हर हेल्थ टॉक्स में एक ऐसी शख्सियत को मैं लाई हूँ हु स्पीक्स हिज माइंड। जो उनके दिल में है वो खुल के बोलते हैं। वो इश्यूज के बारे में बहुत स्ट्रांग राय रखते हैं और राय बिल्कुल बेबाकी से रखते हैं। इस कारण बहुत बार वे सुर्खियों में आते हैं, पर उनकी पहचान केवल इतनी नहीं है। 17,000 से ज्यादा IVF बच्चों के वो गॉडफादर हैं। 100 देशों से ज्यादा के मरीजों का वो सफल इलाज कर चुके हैं IVF के द्वारा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बड़ा नाम है और अब जीवन के वानप्रस्थ में एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मेरे जीवन में उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है उनके बिना जाने। क्योंकि लगभग 20 साल पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था एक मैगजीन में, और उसी को पढ़कर मैंने डिसाइड किया था कि मैं IVF की फील्ड में आना चाहूँगी। और फिर उसके बाद मेरी यूट्यूब की जर्नी जो है वो सर के कारण ही शुरू हुई, क्योंकि उनके ब्लॉग में मैंने पढ़ा था कि नए डॉक्टर्स को अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए यूट्यूब या इस तरह के माध्यम का सहारा लेना चाहिए। तो सर आपसे इतना ज़्यादा है बात करने के लिए, चाहे वो यंग डॉक्टर्स हों, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हों, इन्वेस्टमेंट वाली कम्युनिटी, स्टार्टअप कम्युनिटी हो, या कोई भी वो जो अपने जीवन को ना एंथुजियाज्म से जीना चाहता हो। तो बहुत सारी बातें हैं आपसे पूछने प्रिया, के मुझे लिए। मालूम नहीं कि तुम्हारा ये जो पॉडकास्ट 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है। मेरी बीवी एक ही चीज बोलती है, एक बार मैं शुरू करता हूँ तो बंद नहीं करता हूँ। तो बहुत सोच समझ के सवाल पूछना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं जितने लोग हैं सबके रुचि के जो सवाल है वो पूरे लिख के लाई हूँ, और पूरे सवाल पूछने के बाद ही आपको छोड़ूंगी। डेफिनेटली। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्लेटफॉर्म दे अगर मेरा जो राय है वो जितना, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट। बट आई विल से वन थिंग, आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू, बिकॉज जैसे तूने मेरे बारे में थोड़ा होमवर्क किया, मैंने तेरे बारे में भी थोड़ा सा होमवर्क किया, एंड आई थिंक इट्स रिमार्केबल दैट यू आर प्रैक्टिसिंग प्लस जो आयरन मैन या आयरन वुमन व्हाटएवर जो तो करती, विच इज लाइक आई ऑलवेज फील नेक्स्ट जन्म में और कुछ नहीं तो IVF डॉक्टर तो वगैरह ठीक है, लेकिन मैं आयरन मैन जरूर करना चाहूंगा। इसी जन्म में कर सकते हैं। तेरे से इंस्पिरेशन लूंगा। अभी सर हाल में आपने जीरोधा पे ट्वीट किया था और वो बहुत ज़्यादा वायरल चला गया, जिसमें आपने कहा था कि ये जो विड्रॉल की लिमिट है ये सिर्फ 5 करोड़ क्यों है। इसके बाद रेडिट और सारे जो फोरम्स हैं उस पर जैसे आग लग गई, और सबके मन में एक ही सवाल था, 400 करोड़ की नेट वर्थ एक डॉक्टर की कैसे बन सकती है? मेरी 400 से ज्यादा है। वो जाने दो। तो मुझे यही तो खराब लगता है कि लोगों को मेरे नेटवर्क से मतलब है। मैं जो काम करता हूँ, लोगों को खुशी देता हूँ, उनके बच्चे देता हूँ, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी कोई कदर नहीं करता है। तुम क्या फर्क पड़ा, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 को, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। देयर इज फाइनेंशियल इनकम एंड देयर इज इमोशनल इनकम। फाइनेंशियल इनकम आएगा, फाइनेंशियल इनकम जाएगा, मनी इज फाइन। जो इमोशनल इनकम है जो डॉक्टर को मिलता है, दैट इज इनकम्पेरेबल। लेकिन अगर तुम बहुत फाइनेंशियल इनकम के ऊपर अटेंशन दोगे तो फाइनेंशियल इनकम भी नहीं मिलता है और इमोशनल इनकम भी नहीं मिलता है। तो मैंने जो ट्वीट किया था वो इस हिसाब से नहीं किया था कि किसको क्रिटिसाइज करने के लिए। मैंने बोला कि एक सही तरीका रहता है, जब मेरे पैसे हैं तुम मुझे मेरे पैसे दो, तुम मेरे पैसे रखते हो, तुम फ्लोट उसके ऊपर तुम पैसे बनाते हो, which I didn't think was fair. But I think the response was also very mature. So I'm quite happy कि उसके कारण मेरा तो फायदा हुआ ही, लेकिन दूसरे लोग का भी फायदा हुआ। अच्छी बात है।
उस ट्वीट के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे थे, आपकी कितनी नेटवर्थ है। तो सर एक और ये भी चीज़ होती है कि जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं इस थॉट के साथ बड़े होते हैं कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में है जो नोबल प्रोफेशन है, और अगर बहुत ज़्यादा पैसे बनाना है तो बिजनेस में चले जाएंगे। पर एज अ डॉक्टर यू कैनॉट बी अ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, दैट इज व्हाट इज द थिंकिंग इज, एंड वाई डॉक्टर्स जितने प्रोफेशनल्स हैं, सीएज हैं, with few exceptions even lawyers, because all of us make money from people's sufferings. So it is not considered as a right benchmark to aim for a lot of wealth. तो आप ये बताइए कि how can a doctor or any professional create that kind of wealth? I think great point. One thing I'll tell you, the trouble with being a doctor or a CA or a lawyer as a professional is you're a daily wage earner. जब तक तुम काम करते हो तुमको उस दिन के पैसे मिलते हैं, तुम अगर काम नहीं करोगे तो उस दिन तो पैसे ही बंद हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर डरते रिटायरमेंट का कि रिटायरमेंट के बाद फिर मैं क्या करूंगा। और इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल में किसको कोई सिखाता नहीं है, कॉलेज में कोई सीखता नहीं, क्योंकि टीचर्स और प्रोफेसर्स को उसके खुद ही बारे नहीं, में जानकारी नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ, यू गेट एक्टिव इनकम विच इज योर डेली वेज विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लिमिट। दिन में 24 घंटे है, हर एक की कैपेसिटी होती है, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम स्ट्रीम जो आप रात को सो नहीं सो कुछ भी हो वो आपके लिए पैसे कमाता रहता है। एंड टू दैट एक्सटेंट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज फॉर एग्जांपल माय फादर, ये वो दिनों में ये जो एमएनसी कंपनीज थी उनकी शेयर सर्टिफिकेट्स वो सब आ रहे थे, एंड दीज वर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे याद है जब मैं छोटा था स्कूल में वो पेपर फॉर्म्स होते थे शेयर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, तो वी वुड डू दैट। बट उन्होंने ये सिखाया कि इन्वेस्टिंग इज एज इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली ऑफ कोर्स यू नीड टू अर्न, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। डॉक्टर्स हैव गुड कैश फ्लो, you need to save. Being a Marwadi, that's helpful. I'm frugal. But much more important, you need to invest. And where do you invest? So basically asset classes there. And I enjoyed reading. And then I was because ek to investing ka matlab samajhte ho, which is ingrained. And I was very fortunate to have Rakesh Jhunjhunwala as one of my patients. It made such a big difference because this is a living example of someone who started with literally zero and is worth billions, and started from nothing and then did it correctly, ethically in a listed space, जो कोई भी कर सकता है। दूसरी चीजें तो सब कोई कर नहीं सकते, आपके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, but he did it well. So that was such a great example. तो I would be eternally grateful. और ये फाइनेंशियल इनकम से मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फिर जब मैं पेशेंट को ट्रीट करता हूँ तो जो पेशेंट के लिए सही है मैं पहले वो सोच सकता हूँ। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट, द फोर्थ थिंग, earning the money is important, saving it is important, investing, but learning how to spend it well is actually the hardest thing in the world. And that again, I'm so grateful to my parents for, because they always said, "Tum paisa kiske liye kama rahe ho?" You know, unless you help someone else, that money is actually sterile. And that really has made such a big difference. And fortunately now, I can afford to do things. The only person I need to ask for permission is my wife. She gives it, fortunately. तो then तुमको जो लगता है नहीं ये ठीक है, ये करना चाहिए, you can actually run your experiments. तो सिर्फ दिमाग में नहीं रहते. I can find young people who will implement it. So God has been kind, no question about that. I think that is what differentiates you. So now we have many professionals who are high net worth, but one, they're very reluctant to openly admit as you do. And secondly, they're very, very reluctant to spend it on anything outside of their family, even if it's an investment. So I think that is what differentiates you from, the other people who are making a lot of money. I think, I honestly believe this. I think जैसे अपन बोलते हैं ना, man is a social animal. तो ये जो altruism की streak है, I think it is there in everyone. I honestly think that. Look at two children playing. They're quite happy to help each other. So that's inborn. Initially, when as an individual human, you could do very little. When you lived in a tribe, you could do a lot more. I mean, that's the family unit. So I think, लेकिन तकलीफ क्या होती है कि लोगों को मालूम नहीं मैं किसको दूं, कैसे दूं, उसका उपयोग बराबर होगा, दुरुपयोग होगा. And to that extent, again, I've been very fortunate because I'm very opinionated. I said, no, ये मुझे ट्राई करना है. ट्राई करो, हो सकता है. मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है जो फेल हुई है. मैंने चीजें ट्राई की है जो सक्सीड हुई है.
बट एटलीस्ट जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं. राइट. तो दूसरे लोग मुझको लगता है भी करते हैं. हाँ. अभी आई डोंट नो, आई एम नॉट ashamed about the fact that I have money. Why should I be ashamed? I've earned it correctly, I've earned it ethically, I pay all my taxes on everything else, so there shouldn't be a problem. लेकिन पैसे होने से ये तो फायदा होता है कि तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो. सर बहुत पहले मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैंने आपका मैगजीन में एक इंटरव्यू पढ़ा था. सो यू हैव बीन वन ऑफ द डॉक्टर्स हु हैज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ टॉकिंग डायरेक्टली टू पेशेंट्स, and not only talking directly to patients about your skills, what you have to offer, but also teaching them. So after this, now if you see, there's hardly any doctor who does not have a YouTube channel or an Instagram account. So now it has become very common, but back then in our days it was very unusual for doctors to come out there and talk to patients on a YouTube video or something. So what made you do that, and how do you think that has shaped the times to come? I think, again, great question. I'm a second generation doctor. So my parents were senior doctors. And even in that generation, so much of medicine changed. Cut practice, Right. kickback, referrals. I mean, there used to be a time when you were proud of the fact that you were a doctor. Today, honestly, sometimes I'm ashamed of the fact that I'm a doctor. Because जो respect रहता था, आजकल छोटे गांवों में भी respect है, लेकिन बम्बई में डॉक्टर हो यानी तुम कुछ तो crooked करते ही होंगे. That's the default. So initially, my parents, at least in their day, the default was, okay, good doctor will do good for us, unless you messed up. Here, the assumption is completely different. And the reason for that is, again, very simple. Doctors are very simple people. Doctors को क्या चाहिए? बहुत सारे patient चाहिए. बहुत सारे patient आ गए तो नाम बन गया, fame बन गया, पैसे बन गए, everyone is happy. और तुम doctor बनते हो क्योंकि you enjoy medicine, you like helping people. Similarly, patients are also very simple people. कोई patient medicine सीखना नहीं चाहता है. Patient को तो एक ही चाहिए, मुझे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो जो मेरी देखभाल करेगा. तकलीफ क्या? और पुराने जमाने में कोई प्रॉब्लम रहता नहीं था. डॉक्टर था, पेशेंट था, रिलेशनशिप था, नर्सिंग होम्स रहते थे, तुम्हारी कम्युनिटी, सब लोग एक दूसरे को जानते थे. सो वर्ड ऑफ माउथ वर्कड वेरी वेरी वेल. एंड डॉक्टर्स केयर्ड अबाउट देयर रेपुटेशन बिकॉज इट लास्टेड. फिर क्या हो गया? ये सब मिडलमैन आने लग गए. फैमिली फिजिशियन, जीपी, तुम मुझे कट दोगे तो मैं तुमको पेशेंट भेजूंगा. फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो उसको पूरा कॉर्पोरेटाइज ही करके रख दिया है. सो वी थॉट द ओनली सोल्यूशन इज cut out the middleman. How do you cut out the middleman? The only way of cutting out the middleman in this day and age is through the digital medium. Right. Now, I was fortunate. I was young. The internet had just come to India. We'd seen what was happening overseas. And how do you connect directly with patients? And we thought, see, the word doctor, I always tell people, don't realize this. The word doctor is derived from the word dossier, which means to teach. Just a doctorate hoti hai na. Someone who's a PhD is a doctorate is because he's learned so much. So the first job of a doctor is actually to teach a patient before treating a patient. Why is that? Because if you teach a patient, then the patient has realistic expectations. इतना patient के हाथ में, इतना doctor के हाथ में, फिर ऊपर वाला मालिक. लेकिन कम से कम doctor ने मेरी treatment ढंग से की. That's what you need. And you can't just do that. You can't be arrogant. You can't be rude. You have to explain. You have to be kind. And the one thing this has taught me is empathy. बिकॉज अगर तुम पेशेंट के साथ बात करना चाहते हो, स्पेशली तुम पब्लिक चैनल पे करते हो, तो यू नीड टू नो पेशेंट के मन में क्या है, पेशेंट क्या सोच रहा है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, डॉक्टर्स जस्ट लव यूजिंग जार्गन. लेकिन तुम अगर पेशेंट के साथ वेबसाइट पे करोगे तो इट हैज टू बी सिंपल, क्लैरिफाइड, व्हिच हेल्प्स मी अ लॉट बिकॉज आई हैव टू थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. आई कैन यूज इम्प्लांटेशन, लेकिन बेचारे पेशेंट को इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है वो कैसे मालूम, तो मैं कैसे समझाऊं. तो बहुत सारी चीजें की हमने. किताब लिखी, वेबसाइट लिखी. किताब ठीक है, लेकिन कोई किताब पढ़ता नहीं था, तो इसलिए हमने कॉमिक बुक लिखी. कम से कम कॉमिक बुक तो लोग देखेंगे. चलो फिर ये नहीं करते. तो हमारी फिलॉसफी है, ये है कि मेडिसिन एग्जिस्ट्स ओनली फॉर वन रीजन, फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल पेशेंट सेंटर्ड मेडिसिन. तकलीफ क्या होती है? जब तुम डॉक्टर बन जाते हो ना, तो तुम काफी एरोगेंट हो जाते हो. मैंने इतने साल पढ़ाई की है, मेरे इतने साल एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपर्टीज है. तुम तो स्टूपिड पेशेंट हो, तुमको क्या समझता है. एंड देन दिस एटलीस्ट हेल्प्स यू रियलाइज कि पेशेंट के मन के अंदर क्या है. और उससे फायदा ये होता है कि फिर पेशेंट कुछ भी सोचता है, पेशेंट का ये तो कंफर्ट है कि हाँ, ये डॉक्टर मेरी बात सुनेगा. बट मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है, क्योंकि जब पेशेंट मेरे पास आता है, तो पेशेंट अगर वेबसाइट पढ़ के आता है, तो पेशेंट का जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो यहाँ के बजाय यहाँ है. तो मैं जो जवाब देने वाला हूँ,
ट्रस्ट इज ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश, करेक्ट, देन तो करेक्ट। फिर मेरा काम भी आसान हो जाता है। एंड टेक्नोलॉजी की एक चीज बढ़िया है कि इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। तो जब हमने पहले की तो वेबसाइट किया, फिर यूट्यूब, अभी हमारा चैटबॉट है। तो मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ तुमको कंसल्टेशन करना है ना, कभी भी करो, फ्री में करो। तो देन दे आस्क कैसे? क्योंकि मेरा चैटबॉट है। Now the chatbot is trained with a language learning model which is based on my information जो मैंने क्रिएट किया। तो जब मैं आपसे बात करूंगा फेस टू फेस, मेरा चैटबॉट तुमको बोलेगा कम्यूट करने की जरूरत नहीं, पैसे करने की जरूरत नहीं, कभी भी कर सकते हो। वी थिंक दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंसल्टेशन। फिर लोग बोलते लेकिन वो जो डॉक्टर का जो टच है वो नहीं जाएगा, डोंट पेशेंट्स नीड दैट टच? आई सेड डोंट गेट कंफ्यूज, मेरा चैटबॉट बैठ के आईवीएफ तो नहीं करने वाला है। तुमको जब एक्चुअल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक प्रिपरेशन है वो तुमने ऑलरेडी एडवांस में किया है, तो तुम्हारी भी लाइफ आसान हो जाती, मेरी भी लाइफ आसान हो जाती। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक वॉट यू सेड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, क्योंकि जब मैं शुरू में अपने यूट्यूब वीडियोस बनाती थी तो मैं बड़ा ही जैसे किताब में अपन किसी मेडिकल स्टूडेंट को या अपने फेलोज को सिखाएं वैसा बताती थी। और फिर मुझे समझ में आया कि जो पेशेंट के दिमाग में है वो अलग ही चीज़ें हैं, कि मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, मैं पपीता खा सकती हूँ क्या ट्रांसफ़र के बाद में। तो ये चीज़ें जो हम डॉक्टर्स को बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट लगती हैं, एक्चुअली वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज्वलंत उसके लिए सवाल है। और बहुत अच्छी बात क्या हुई कि एज अ डॉक्टर हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे आईवीएफ करें, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप जिस शहर में हो उसके दायरे में आपको रहना पड़ेगा। बट पूरे विश्व में किसी का भी आईवीएफ चल रहा हो, वो आपका वीडियो देखकर उस मिनट पे आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो कहीं न कहीं आपका भी एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है उसकी जर्नी में। सो आई थिंक दैट हैज़ मेड अ वेरी बिग डिफरेंस इन माय ओन प्रैक्टिस। I'm so happy to hear that and I just wish every doctor would realize that। हम तो बोलते हैं हर मेडिकल स्टूडेंट, अगर मैं कोई मेडिकल कॉलेज का डीन होता तो मैं एक रूल बनाता, फ्रॉम डे वन तुम तुम्हारी खुद की वेबसाइट बनाओ। थिंक अबाउट इट, क्योंकि तुम जो भी कुछ सीखते हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी कुछ है, तुम उसको नोट्स तो तुमको बनाने पड़ते हैं। प्राइवेट नोट्स के बजाय तुम तुम्हारी वेबसाइट पे डालो। बट व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग इज, कितने लोग तुम्हारे नोट्स पढ़ेंगे? बहुत कम, क्योंकि हर एक डॉक्टर के लिए 1000 पेशेंट है, फिर तुमको पेशेंट को सिखाना पड़ेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर तुम गुजरात में हो तो तुम गुजराती में सिखाओगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ एंटायर मेडिकल प्रैक्टिस विल चेंज, बिकॉज स्टूडेंट्स सीखेंगे कम्युनिकेट कैसे करना पेशेंट के साथ, जो तुम्हारी जो लोकल लैंग्वेज है पेशेंट के क्या, और फिर ये मीडियम सब इंटरैक्टिव होता है। से अगर आपके पास कोई आएगा, वो बहुत डरता है सवाल पूछने के लिए, क्योंकि अरे डॉक्टर प्रिया इतनी बिजी है, इतनी बड़ी डॉक्टर है, चारों ओर पेशेंट रुके हुए हैं, उनको देर हो रही है, उनको ये करना है, वो करना है। तो आधे तो सवाल वो पूछते नहीं है। उनके लिए भी अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि उनको ऑलवेज लगेगा अरे मैं तो भूल गई, या डॉक्टर ने बराबर ढंग से समझाया नहीं। जब तुम यूट्यूब पे करते हो, ईमेल से करते हो, चैटबॉट, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तुमको जो सवाल पूछने का है पूछो। और मैं तो बोलता हूँ तुम मुझे सवाल पूछो, और अच्छा सवाल है तो मैं उसके लिए एक और आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे डालूंगा, एक और वीडियो चैनल। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल हो जाता है। और अगर ये मेडिकल स्टूडेंट के साथ एनग्रेन हो गया, सी तकलीफ क्या होती है, जब तुम मेडिकल स्टूडेंट हो यू लाइक एवरी अदर रेगुलर पेशेंट। जो तुम्हारी मेडिकल ट्रेनिंग है वो 8 साल की, 10 साल की, क्योंकि तुम एक दूसरे डॉक्टर के साथ बात करते हो तो तुम जार्गन यूज करते हो, बहुत सारी चीज, बैड हैबिट्स पिकअप कर लेते हो। अगर तुम्हारा खुद का जो चैनल है, रेडिट है, कुछ भी है, ट्विटर है, और तुम खुद को बताते हो कि नहीं आई एम एन अप्रोचेबल डॉक्टर, तुम एक्चुअली अप्रोचेबल डॉक्टर बन ही जाते हो। पेशेंट्स भी रिस्पेक्ट करते हैं, तुमको भी लगता है कि नहीं मेरे जो पेशेंट पूछ रहे हैं मुझे इसके बारे में, मैं कितना मेरे पेशेंट से सीखता हूँ। आई टेल ऑल माई पेशेंट्स आई एम गोइंग टू यूज यू एज एन अनपेड रिसर्च असिस्टेंट। क्यों? आपके पास टाइम है, ये आपका प्रॉब्लम है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 10 साल पहले मेरे पेशेंट गूगल सर्च करके बोलते थे डॉक्टर ये पढ़ा, वो पढ़ा, अमेरिका में ये होता है, आप कर सकते हो। आई वुड नॉट अग्री ऑलवेज, बट मैं मेरी राय देता था। आजकल मैं तो बोलता हूँ प्लीज चैट जीपीटी सर्च करो, फिर मेरी वेबसाइट पढ़ो, और फिर तुम्हारे पास सवाल है तो मुझे ईमेल करो। इट्स मच मोर स्पेसिफिक, इट्स मच मोर फन। और पेशेंट से सीखने से ये फायदा होता है क्योंकि तुम समझते हो कि पेशेंट क्या कर रहा है। पेशेंट तो बेचारा 24 घंटे मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, मैं ये सप्लीमेंट लूँ, ये क्लिनिक में ये रिसर्च है, वो रिसर्च है। आई फाइंड दिस वेरी वैल्यूएबल। Absolutely. And there are many of my colleagues when I was very, very active on YouTube, I still am.
बट बैक देन दे यूज्ड टू टेल मी कि तुम लोग जो इतना पढ़ा देते हो तो फिर पेशेंट ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है कि मैडम आपने तो उसमें कहा था डे 5 अच्छा होता है और आपने तो हमारा डे 3 कर दिया। बट आई थिंक वो भी अब समय आ गया है जब पेशेंट चैट जीपीटी से खुद ही निकाल लेता है। तो अब वो जो एक इशू था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से वो कंफ्यूज हो गया, वो या वो रात में 12 बजे परेशान हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इस वीडियो में ऐसा लिखा हुआ है, बिकॉज मेडिसिन इज ऑल्सो वेरी इंडिविजुअल। सो आई थिंक दैट हैज ऑल्सो बिन ओवरकम बाय चैट जीपीटी। बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। सोशल मीडिया तो हर स्टूडेंट का होता है, मगर आपने वेबसाइट ही क्यों कहा? इज इट नॉट इनफ कि हम ट्विटर पे एक्टिव हों या हम लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाएं? मैं खुद की एक्सपीरियंस बताऊं क्या बिल्कुल। आपको? तो वेबसाइट तो थी, फिर लिंक्डइन इतना पॉपुलर हो गया, आई सेड ग्रेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई एम ओपिनियनेटेड, मैं मेरा ओपिनियन शेयर करता था। फिर आईवीएफ तो ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि जो अपना जो फ्यूचर जनरेशन है, वो जब तक तुम उनको ढंग से सिखाओगे नहीं, तब तक वो फ्यूचर जनरेशन की पॉसिबिलिटी क्या है? ये तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूँ। आई एम अ डॉक्टर बिकॉज माई पेरेंट्स एजुकेटेड मी। आई एम अ गुड डॉक्टर बिकॉज आई एजुकेट माई पेशेंट्स, एंड देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट दैट द नेक्स्ट राइट। जनरेशन गेट एजुकेटेड। फिर ये सब कोचिंग क्लासेस आती थी, बायजूस वाज द मार्केट लीडर इन दोज डेज, और वो इतना उल्टा सुल्टा ये करते थे, तो आई वाज वेरी ओपनली क्रिटिकल। बायजूस इज नॉट अ गुड कंपनी, दे चीट, दे लाई, दे मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। आई डोंट नो, आपको याद है वुल्फ गुप्ता, बहुत सारी हाँ। चीजें थी। Because I was so vocal and because Byju's used to advertise so much on LinkedIn, they got me kicked out of LinkedIn. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जो 1,500 150,000 followers थे, went down to zero. So you have no control over a social media platform. राइट। Whereas if it's your own website, you have full control over it. एब्सोल्युटली। So therefore, whatever you create on any other this thing, you should definitely Absolutely. have on your number one. नंबर टू, ये भी याद रखो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम रहता है, इट इज नॉट डिजाइन टू प्रमोट डॉक्टर मालपानी, इट इज डिजाइन टू प्रमोट एक्स और लिंक्डइन और व्हाटएवर। सो दे हैव अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। आज का कंटेंट है 24-20 घंटे ट्रेंड होगा, राइट। फिर नो वन विल बी एबल टू फाइंड इट। राइट। Whereas तुम्हारी वेबसाइट तो है ही, सो आई थिंक दैट्स मच मोर वैल्यूएबल। प्लस हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, वेबसाइट के कोई कंस्ट्रेंट नहीं। मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ मेरी कंट्रोल में है, विच इज व्हाट आई लाइक। एंड आई टेल यू वन बिग एडवांटेज, जब तुम वेबसाइट पे कुछ डालते हो ना, तो पेशेंट पढ़ता है, और फिर तुम अगर वो नहीं करते हो तो पेशेंट तो बोलेगा डॉक्टर साहब आप तो झूठ बोलते हो। जब तुम पब्लिकली कुछ भी बोलते हो तो तुमको तो वो निभाना पड़ता है। सो गुड डॉक्टर्स आर अप्रिशिएटिव ऑफ अदर डॉक्टर्स हु एजुकेट। बैड डॉक्टर्स हेट डॉक्टर्स हु एजुकेट, बिकॉज अरे मैं ये कर रहा हूँ लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ। डॉक्टर को भी मालूम है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जब तक कोई सवाल पूछेगा नहीं तब तक फर्क नहीं पड़ता है। अभी पेशेंट ने चैट जीपीटी पढ़ा और बोला नहीं ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन रेट्स ज्यादा है, तो बेचारा डॉक्टर को भी ही ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग डिफेंसिव। तो आई थिंक it's a matter of time, but people will understand. So Dr. Google is not your enemy. राइट। Dr. Google is the enemy of bad doctors. Good doctors are very happy. हाँ ठीक है, पढ़ के आ जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ तुम अग्री करो नहीं करो, ये मेरा ओपिनियन है। It's up to you whether to accept. Absolutely. And I think the only thing that we have to tell them is that, you are going to go out there, find my videos, other videos, but before you start worrying, just ask me. So before you start crying about it or worrying about it or, feeling very sad about what is going to happen, just come and talk to me. I think अगर हम इतना simple सा उनको sentence बता देते हैं, then no information is scary for them. In fact, lack of information is scary. Because if I don't know, कल मैं एग्जाम के लिए बैठा हूँ, अगर मैंने पढ़ाई की, मैंने मालूम है, मैंने मॉक टेस्ट किए, तो मुझे क्यों एंग्जाइटी होने वाली? अगर मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ क्या होने वाला है, अरे बाप रे ये क्या सवाल, तब मेरी एंग्जाइटी। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन थेरेपी, दैट्स द वर्ड वी यूज। इंफॉर्मेशन थेरेपी से एंग्जाइटी लेवल्स कम होती है, स्ट्रेस लेवल्स कम होती है, पेशेंट का कंफर्ट लेवल बढ़ता है, डॉक्टर पेशेंट का जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ता है। सो आई डोंट थिंक देयर आर एनी साइड इफेक्ट्स फॉर इंफॉर्मेशन थेरेपी। And what has happened, probably you don't even realize it, but you started that YouTube revolution. I was one of the early followers, and now practically every doctor is on YouTube. And almost every IVF doctor, you will find that they have their own videos, they're talking to patients. So I think this is what the right idea is. So eventually, everybody, whether they like it or not, they're forced to adapt to it. I think that's all for the best, and I'm happy to take credit for that. Because when we started many years ago, we would give lots of lectures and medical conferences why every doctor should have a website. वो जमाने में तो ईमेल एड्रेस भी नहीं होता था, तो क्या बातें कर रहा है वेबसाइट का, किसको क्या फर्क पड़ता है। So sometimes there are advantages to being ahead of the curve, Yes. and sometimes there are disadvantages. But मैं तो आज बोलता हूँ
कोई आईवीएफ क्लिनिक बिना वेबसाइट खोल के कोई शुरू ही चल नहीं नहीं करेगा. तो आई थिंक मेडिकल प्रैक्टिस इज ऑल्सो हेडेड इन दैट वे. एंड अल्टीमेटली तुम उसकी, लाइक एवरीथिंग एल्स, टेक्नोलॉजी इज अ टूल. तुम उसको कैसे यूज करो वो तुम्हारे ऊपर है. See, you had been very vocal, as you said, about Byju's. I think what happens is that in India or anywhere in the world, people will do anything for a child. And they will do anything to have a child, and they will practically do anything that you ask them to for the better future of their child. And that is, I think, what is wrong with IVF, because people are desperate and some of us are taking advantage. And that is exactly what is happening in edtech, because every parent wants the best for their children. And I think because you have seen that desperation in the childless couples, I think it really irritated you, because nobody understood why is he going on and on and on only about Byju's or edtech companies or White Hat Junior. But I think being an IVF specialist, I understood that it is the vulnerability of a couple which we have seen much before they had that child, which these people are playing on. I think two reasons I would say. One is I think you can exploit people when they're emotionally vulnerable and when they're ignorant. Because when they're ignorant, they're gullible. वो कुछ भी बात मानेंगे. एक बार तुमने उनको educate कर दिया. और when it comes to their children. Yes. तो जब बच्चों की बात आती है तो हम सब अंधे हो जाते हैं. True, true. But इसके लिए बहुत सारी गलतियां होती है. Like you correctly said, then out of desperation, you go to a bad doctor who then cheats you. And once you've had a bad experience with one doctor, then you're not willing to trust any other doctor. And it's exactly the same thing with the education. Now, I know what a difference education has made in my life. Let me also tell you what I strongly believe in. My daughter, both of them, they won the ovarian lottery, born with a silver spoon, will do well in life. My granddaughter will do well in life. उसने बड़ी बात क्या हुई? You have so much privilege. How do I make sure my driver's children get exactly the same opportunities as my granddaughter? That's my goal. That's what you call about impact. How else will this country possibly improve? And I think there are just so many problems with the education system. And I see that day in and day out, because I see IVF patients. These are MBAs, CEOs, and they know nothing. They don't even ask intelligent questions. I said, I'm not God. I'm not a mind reader. I'm not a fortune teller. I can't tell you what's going to happen. At least ask me questions so I can answer them. It's your life. You need to know what your preferences are. There are always going to be options. They're so reluctant to ask. I think they're scared to ask. And I'll tell you why they're scared to ask. So patients don't ask questions. और मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ, मुझको चिंता लगती जब तुम सवाल नहीं पूछते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा मन पढ़ नहीं सकता. अगर तुम सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा. हो सकता है जवाब कड़वा रहेगा, मे नॉट बी व्हाट यू वांट, बट आई नीड टू टेल यू द ट्रूथ. फिर मैंने सोचा कि ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं. एक तो जो डॉक्टर की इमेज है, डॉक्टर बहुत बिजी है, एक ये प्रॉब्लम होता है. दूसरा, थोड़े डॉक्टर नाराज होते हैं जब तुम सवाल पूछते हो. बट मच मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो क्वेश्चनिंग की जो एटीट्यूड है, वो स्कूल चिल्ड्रन से अपन निचोड़ देते हैं. तुम अगर 2 या 3 साल का बच्चा है, वो तो बार बार सवाल पूछेगा, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं. वो जब स्कूल में जाता है तो 4-5 साल के अंदर, चुप बैठ, तू क्यों पूछ रहा है, हमने जो पढ़ाया है वही सही है. सो 12 years of schooling just kills all your initiative, all your innovation, all your creativity. So therefore we realize that a lot of the problem is the way the schooling system, and that is where the Byju's just made a bad situation worse. क्योंकि तुम क्लासरूम में भी बैठ के लेक्चर सुनते हो, कोचिंग क्लास में भी जाके लेक्चर सुनते हो, और क्या क्या सिखाते हैं, एग्जाम में मार्क्स कैसे कमाना, which is great. I always did very well. I'm not complaining. But the point is, how does that translate into real life knowledge? And then I realized कि जब तक ये attitude शुरू से नहीं होगी, patients सवाल कब पूछेंगे as adults, जब when they were taught how to ask questions, and not just how to ask questions, how to evaluate the answers. Which is why we created so much patient educational material. हमने एक patient education library खोली, हमने बहुत सारी किताबें लिखी. पेशेंट्स को समझना चाहिए डॉक्टर के साथ कैसे बर्ताव करना. बहुत सारी किताबें थी डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए. ताली 2 हाथ से बजती है. सो ऑल ऑफ दैट वाज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन. गूगल से बहुत फर्क पड़ा, बिकॉज तुमको मालूम नहीं तो तुम डॉक्टर के पास तो टाइम नहीं रहता है, गूगल को पूछो. चैट जीपीटी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है कि तुम जो मन में आए, कोई चैट जीपीटी के भी बोलेगा नहीं ये स्टूपिड क्वेश्चन है, चैट जीपीटी नाराज नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा. अच्छा बेटा नहीं समझा, मैं फिर से समझा. अच्छा इससे नहीं समझा, मैं ग्राफिक समझा, व्हाटएवर इट.
फिर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है. सो विच इज व्हाट वी वांटेड, कि एक बार बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गई एज अ चाइल्ड, दैट इज मच मोर वैल्यूएबल देन तुम ज्योमेट्री, हिस्ट्री, फिस्ट्री जो भी कुछ. नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं सीख सकता हूँ, खुद के लिए सीखता हूँ, मुझे किसकी जरूरत नहीं है सिखाने के लिए. दैट्स व्हाट वी वांटेड. तो इसके लिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज एआई ट्यूटर्स, दैट इज व्हेन वी रियलाइज जो अपन डेमोक्रेटाइजेशन बोलते हैं ना एजुकेशन का, दैट इज रियलिटी. सो नाउ वी हैव ओवर 120 ऑफ दिस. बिकॉज जब हमने बाइजू को क्रिटिसाइज किया तो लोग बोलते तू तो एक तो डॉक्टर है, तू क्या समझता है, तू एजुकेटेड थोड़े, यहाँ होगा बड़ा आईवीएफ डॉक्टर, दैट इज इररेलेवेंट. बट मोर इम्पोर्टेंटली क्रिटिसाइज करना आसान है. वेयर इज द बेटर ऑल्टरनेटिव, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. ओके ठीक है, कोचिंग क्लासेस खराब है तो बच्चे करे क्या. सो इसके लिए मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ी, मुझे भी सीखना पड़ा हिस्टोरिकली लोग क्या करते थे. स्कूलिंग सिस्टम इतनी ब्रोकन क्यों है? क्योंकि मकौले ने स्कूलिंग सिस्टम इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस की? वो बच्चों को सिखाना नहीं चाहता था, वो ब्रिटिश राज के लिए क्लार्क्स क्रिएट करना चाहता था. बट अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर ऑल दीज इयर्स we're still stuck with the same system. Such a tragedy. Everything else in life has changed. The phones you use, the Ubers you catch, the quick commerce you use. Education is still stuck with exams, textbooks, teachers, so many things. And that is why we think एक बार हमारी जो अपनी पाठशाला और हमने मॉडल शुरू किया, because लोगों के मन में स्केप्टिसिज्म बहुत रहता है. बच्चे सीखेंगे नहीं, बच्चे सिर्फ गेम्स खेलेंगे, बच्चे होशियार नहीं है, बच्चे को समझे. I said, don't underestimate children, please. I learned so much from kids because they come with a clean slate. You allow them to learn, they're digital natives. They pick up 10 times faster than what I will. And that's the reality. But if you don't respect them, how will any of this change? And our hope is ये जो community centers है, हम उनको क्या देते हैं? Safe learning space. Safe का मतलब क्या होगा? कोई detention नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कोई homework नहीं देने वाला है. Come because you enjoy. पेयर टू पेयर लर्निंग, बिकॉज रियलिटीज अपन एक दूसरे के दोस्तों से ही सीखते हैं. टीचर है क्लासरूम में, लेकिन कुछ समझा नहीं तो बार बार टीचर को तो पूछ नहीं सकते हो. लेकिन अरे यार मैं ये नहीं समझा, मेरे कोई 1 साल सीनियर है, मैं उसकी नोट्स पढ़ सकता हूँ. सो दैट्स द पेयर टू पेयर लर्निंग, बिकॉज इट्स मच मोर फन लर्निंग विथ फ्रेंड्स एंड फ्रॉम फ्रेंड्स. जो सोशलाइजेशन का एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड इज वी प्रोवाइड यू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी. बिकॉज हम कंप्यूटर्स जो देते हैं, एजुकेशनल कंप्यूटर्स, वो सब एआई ट्यूटर्स के साथ ऑलरेडी इक्विप्ड है. तो फिर तुम कुछ भी करो, और हम लर्निंग जर्नी मैप कर रहे हैं कि these are safe. The parent can see what the child is learning, and it is populating the child's website. तो अभी हमारी जो भी कोई अपनी पाठशाला के स्टूडेंट है, not only can the parent and everyone see, we're getting real-time insights into a digital dashboard of what thousands of students all over the country are learning. Are they learning Canva? Are they learning something else? Up to you. तुमको जो सीखना है. हम थोड़ी बोल रहे हैं. तो थोड़े लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि उनको एग्जाम में मार्क्स चाहिए. थोड़े लोग नहीं, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्या है, whatever else it is. Now, once we manage to do this, I think then people's attitudes will change. And why do we call it a community micro school? Because it's not only the children who are learning. जो बच्चों के पेरेंट्स है वो भी आके, ओह अच्छा मेरा बेटा ये सीख रहा है, बस तू मेरे लिए आरटीआई फॉर्म भर ले, या ये वेबसाइट है, मुझे वेबसाइट खोलनी नहीं आती. ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो जनरेशन गैप है, ग्रैंड पेरेंट्स अगर ग्रैंड चिल्ड्रन से सीखेंगे, बिकॉज उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मोबाइल की करना आता है, साइबर क्राइम होती है, फ्रॉड्स होते हैं. बच्चे को तो सब समझता है, वो तो आराम से. तो द ग्रैंड पेरेंट्स विल कोच एंड मेंटोर. अपना जो इंडियन ट्रेडिशन है, अपनी जो ये वो बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे उनको डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे. सो एवरीथिंग हैपेंस इन अ कम्युनिटी. And the trouble with schools is what? It's such an artificial situation. कि 9 से 5 तुम पढ़ाई करो, पर सही पढ़ाई तो रियल लाइफ में होती है. क्लासरूम में तो तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो, एग्जाम क्या करना वो पढ़ते हो, और क्लासरूम में बात कौन करता है? टीचर बात करती है, बच्चे चुप रहते हैं. हाउ कैन यू पॉसिबली लर्न? दिस इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग, इट्स कॉल्ड क्रैमिंग. तो बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो सब कुछ 2 दिन के बाद भूल जाता है. I'm very excited. And I can absolutely resonate because there is a group of students I told you, उन्होंने अपना जो एक छोटी सी जगह है उन्होंने रेंट पे ली है, वहाँ पर वो अपना दोपहर का खाना बनाते हैं. और क्लास में जब कई बार टीचर्स पढ़ाते हैं तो उन्हें जो समझ में नहीं आता वो आके वहाँ पर पढ़ते हैं. उसका नाम उन्होंने दिया इल्म. इल्म इज ILM, दैट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉड्यूल. दे हैव नेम्ड इट देमसेल्व्स. इल्म उर्दू में सीखने को कहते हैं. सो ये सारे जो बच्चे हैं ये कोविड के टाइम पे स्कूल से निकल गए थे. अब जब वो वापस आए हैं वो बहुत पीछे हो गए हैं पढ़ाई में.
तो वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर वो इंटरनेट है उनके पास में, कुछ हमने जो ऐप्स हैं उसका पेड वर्ज़न उनको दिया है। सो एज़ यू सेड सम ऑफ देम आर एक्सप्लोरिंग एआई, सम ऑफ देम आर टेनिस प्लेयर्स, या वो स्टेडियम जाते हैं तो वहाँ पे दे गेट न्यूट्रिशियस फूड, एंड बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट उसको जो चीज़ क्लास में नहीं समझ में आई, वो एग्ज़ैक्टली उस यूट्यूब वीडियो को देख के और समझ जाता है। देयर इज़ अ मेंटर हू इज़ देयर, सो ही मेक्स श्योर दैट यू नो एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। सो बट क्या होता है एज एन इंडिविजुअल, आप इतना ही कर सकते हो। जैसे मेरे 2-3 ऐसे ग्रुप्स हैं छोटे-छोटे, बट जब आपके जैसा कोई आता है और इस विज़न को लेके आता है, आपने इसको पूरे देश में कर दिया, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज़ दैट स्केल ऑफ थॉट, दैट God is being kind, Priya. मैं मेरे पैसों के साथ करने क्या वाला हूँ? And I think we creating a model which is sustainable, scalable, frugal. Why is that? Because we say this is proof of concept. मैं theory lecture नहीं देने वाला हूँ. ठीक है, डॉक्टर मालपानी इज एन इडियट, मत सुनो, लेकिन जाके पढ़ तो देख लो, मेरे बच्चों के साथ बात करो, यू नो, सी व्हाट दे हैव टू से, एंड देन तुम्हारा शायद ट्यूबलाइट चमकेगा कि दिस इज सो मच बेटर फॉर एजुकेटिंग. अच्छा, तुम तो ये, मैं मेरे बच्चों के लिए भी ये कंप्यूटर खरीदूंगा, मैं भी कर सकता हूँ, लाइक यू सेड, स्मॉल स्केल पे. सो एट सम पॉइंट डॉक्टर मालपानी डजंट वांट टू डू इट. एट सम पॉइंट डॉक्टर मालपानी इज गोइंग टू बी डेड एंड गॉड. द आइडिया शुड नॉट डाई. सो यू नो हु रन्स अपनी पाठशाला? This is a group of students. They're all 22, 23, 25. मैं तो सबको बोलता हूँ, बॉस, आई एम अ डायनासोर, मुझे तो कुछ समझता नहीं है. लेकिन 22 साल का बच्चा जो अभी अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, समझ, he knows exactly what these kids require. Right. And these kids will listen to him. Right. He talks their language. So why will anyone want to listen to me? So I'm a very lazy person, Priya. I said, my job is only to sign a check. फिर बाकी तुम करो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो गया सीखो, नया एक्सपेरिमेंट रन करेंगे. So I have a model in my head, but this is an untested, unproven model in India. And there's a lot of resistance, too many vested interests. Private schools charge an arm and a leg, तो वो brand name का ये है. Parents are very scared. I cannot believe कि parents can see in front of their eyes there are so many unemployed graduates. Graduate करने के बाद कोई job मिलने वाला है, उसकी भी कोई surety नहीं है. तभी भी तुम वही चीज करते जा रहे हो जो तुम 5 साल, 10 साल, 20 साल, and things are going to get much worse for your kids 10 years down the road, because the number of graduates will keep on increasing, the number of jobs is going to keep on shrinking. It's so obvious to me. And मुझे और मेरा blood pressure बढ़ता है कि can't you see for yourself कि तुम तुम्हारे बच्चे को बायजूस भेजो, physics वाला भेजो, you're just pushing them from the frying pan into the fire. It's just more of the same. Where are you teaching them how to learn? How are you teaching them how to learn for themselves? So I always tell people, you know, बच्चे जो भी कोई सीखे, अगर वो self confidence सीख जाते हैं ना कि मैं खुद के लिए मुझे जो चाहिए, because what I teach them today will be completely irrelevant 3 years down the road. And who knows what the world is going to be in 2030. But once he's confident that he can pick up the skills, he or she, I don't think that's going to be a problem at all. So I'm very, very, you know, अपन इंडिया की बात करते हैं, India's biggest strength is our human capital. Right. We waste it. We, you know, I mean, it's such a shame कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 1000 बच्चे बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं. They should be creating their own jobs. It's very easy to do all this stuff. It's not even hard. Those opportunities exist. And that's why I have this sense of urgency. 200 million students wasting one day, 200 million days, wasting 6 months, wasting a year. That's never going to come back. One thing I'll tell you about AI. तुम अगर AI चैटबॉट है, तुम एक बना सकते हो, 1000 बना सकते हो. AI रोबोट है, तुम एक बना सकते हो, 1000. तुम ह्यूमन बीइंग्स थोड़ी बना सकते हो at this scale. And this is the one thing which India can do, because our population is so young and no one can do it. But you're wasting all that talent, and then you're ending up with people who can't think for themselves. And then you know what the second order consequences are. फिर politics में freebies करो, ये करो. How will the country possibly progress? लेकिन एक बार बच्चा खुद के लिए समझने लग जाए, नहीं ये जो बोल रहा है वो शायद सही नहीं है, या मुझे थोड़ा और खुद इन्वेस्टिगेशन, तो फिर देश बदलेगा. एंड आई सी दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी, यू नो, अगर कोई सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से देखे, आपका सोशल मीडिया देखे, तो आप ऐसे थोड़े से कॉन्ट्रेरियन लगते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं. बट यू नो, यू ऑल्सो वॉक द टॉक. सो इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग an edtech company, you have made sure that you know you are also doing something which is constructive, which is evolving like all of us are, but you deeply care about it, and I think that is very very important. because मुझे क्या लगता है कि हम लोग जो आईवीएफ वाले हैं, हम लोग ना 3 या 5 दिन वो एम्ब्रियो के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं.
pH, temperature, ये वो, we don't even bathe with scented soaps. Scent तो हम कभी लगाते ही नहीं, just so that that embryo is safe for 3 to 5 days. But when you see that during pregnancy or the babies that we've made, when we are long enough in practice, it breaks your heart to see them, not being cultured as well as we did in the lab. I love that. I think what you're saying is so true. That 5-day culture which you do, but you also need to think about the 50-year or 6 or whatever this Right. child is, because this child has the rest of. And I'll tell you one thing, IVF babies are privileged. It's not because हम IVF करते, क्योंकि वो parents वो बच्चे के ऊपर इतना love, attention, energy Right. devote करते हैं, because they want, like you correctly said, मेरा बच्चा होनहार होना चाहिए, ये होना चाहिए. लेकिन जब तक अपन उनको tools नहीं देते उसके लिए, तो वो problem होने ही वाला है. And this gives me a lot of joy. See, whatever you may say, ठीक है, IVF doing very well, all that stuff, but ultimately it is fee for practice, in the sense, Yeah. you provide a service, someone pays you for it. With the Apni Pathshala, no one's paying me anything. I'm doing this because it gives me joy. And I think getting joy at a particular part of your life is so valuable. So, जैसे तुमको तो जानता है, जब IVF करते हो, patient बोलता है, doctor, I'm pregnant, how much happiness you get. Perhaps even more, sometimes, but तुम थोड़ी pregnant हो रहे हो, doctor. I said, yes, but she's come to me with all that hope. I know her life is going to change. It gives me so much joy. Now I can multiply that across thousands of students. And what gives me even more joy is it's not something which is done by me. It's done by this group of students who are India's future. आज वो बच्चे 20 साल के हैं, कल वो 25 होंगे, कल वो 30 होंगे. डॉक्टर मालपा जी तो मरने वाला है, लेकिन जो इंडिया का जो फ्यूचर है, यही बच्चे उनको ये करेंगे. उनका कॉन्फिडेंस. This is a group of maybe 20 kids who are now managing 120 pods across the country remotely. Right. Look at their confidence levels. I mean, I just blows my mind. They understand, they document, they have SOPs. I always tell them this is far more valuable than an MBA, because you're getting real life learning, you're dealing with real life problems, and you're being able to solve them. You're thinking up solutions. और हम तुमको नहीं बोल रहे तुम ये करो वो करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो and come back to us with a solution. फेल हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, we will try something else. But it's so gratifying. And I think it is this which is really differentiating you. You have that light in your eyes when you talk about it. And if I tell you about the doctors at my age or beyond, all of us will do reasonably well by 40, 45. We will have reasonable amount of money, but most of us lose that one thing, which is more important than food to live, and that is enthusiasm. you know every day morning, it's a task to be feel enthusiastic, because the world is designed to bring down your enthusiasm, and your fight is that I have to remain enthusiastic today. I learned so much from these kids, let me tell you that. And, that's one of the reasons why I'm an angel investor also. So, you make money in the listed market. You make a lot of money in the listed market if you have good wealth managers. I've been fortunate, like I said, so that's fine. लेकिन जो पैसा आता है वो एक हिसाब से थोड़ा डिटैच, just numbers, large numbers, but still at the end of the day, just numbers. What joy does that give? As an angel investor, मैं startups में invest करता हूँ. And the amount of learning which these entrepreneurs will give you, because they're young, they have a particular perspective. They're all contrarian. They think, "Arey yaar, this is all rubbish. I can do a better job. And I will do a better job." So then the amount they teach you. And the good thing at Malpani Ventures is we are what we call domain agnostic. यानी मैं सिर्फ health tech में नहीं करूँगा, मैं fintech करूँगा, मैं AI करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा. Boss, I'm betting on you. You're a bright guy. You tell me. I'll ask you difficult questions. But if you can convince me that, yes, you understand and you have the right to it, I'm happy to back you. The amount of learning, and therefore I keep on telling you, what can we give the young entrepreneurs? We can give them money. What can they give us? Hope for the future. Right. That the future will be brighter. And that happens across the board. So, ये तो जो commercial startup बोलो, but the social impact startups give you even more joy. So I'm very clear about my buckets for what I call asset allocation. सर एक छोटा सा इंटरप्ट करूंगी. एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, आईपीओ, इन सब का डिफरेंस, पब्लिक मार्केट, इसका शॉर्ट में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस डोमेन के नहीं है. ओके, तो बहुत फर्क है. मैं भी कुछ समझता नहीं था, वेरी ऑनेस्टली. तो मैं भी आई आल्सो लर्न ऑन द जॉब, एंड बिकॉज यू डू इट देन यू गेट बेटर. बट अगेन आई एम क्वाइट लेजी, आई विल टेल यू दैट. तो आई अंडरस्टैंड द थियोरी. Do I have the ability to actually put it into practice? No, because hey, I'm a doctor. I still see patients, and patients will always come first.
तो जो लिस्टेड स्पेस है तुम ये करते हो, उसके लिए यू हैव वेल्थ मैनेजर्स. सो सम पीपल विल डू म्यूचुअल फंड्स, सम पीपल विल डू इंडेक्स फंड्स. As a high net worth individual, I do what is called portfolio management. But just like it's very hard to find a good doctor, it's very hard to find a good wealth manager. People don't understand that. And a lot of them have had such a bad experience. And you know why they have a bad experience? Because incentives are not aligned. जो आपका बैंक मैनेजर है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट, प्रिया तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख है, तुम उधर मत रखो, तुम ये म्यूचुअल फंड खरीदो, वो लास्ट 4 साल में उसका ये हुआ. प्रिया क्या समझती है, ठीक है ओके डाल दे. एंड देन अरे 2 साल में वो तो खाली, हाँ होता है कभी कभी, यू नो, इट डिडंट एक्सप्लेन द रिस्क्स, ऑल दैट गुड स्टफ, एंड यू डोंट नो इनफ टू बी एबल टू इवैल्यूएट द एडवाइसेस. हाउ इज द बैंक मैनेजर बीइंग इंसेंटिवाइज्ड? नॉट बेस्ड ऑन Priya's returns, but because he has targets and revenues to meet. Just like ये corporate chains of IVF clinics, वो IVF क्यों करते हैं? Not that patient को IVF की जरूरत है, लेकिन वो डॉक्टर का टारगेट है कि हर एक महीने में मुझे 10 IVF cycles करनी. This is what I meant about lack of alignment of incentives and interests. The best wealth manager is someone who invests in the same fund which he's telling his clients. If 100% of his, that is called skin in the game. उसका पूरा वेल्थ उसने खुद के फंड में डाला है, तो उसका फंड बढ़ेगा तो उसका भी वेल्थ बढ़ेगा, उसका फंड नीचे घटेगा उसका भी वेल्थ, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली अलाइन होंगे. Those are difficult to find, let me tell you that. So to that extent I've been lucky. तो ये listed, तो I also read and stuff like that, but I don't make any decisions. क्या स्टॉक खरीदना, क्या स्टॉक खरीदना, मुझे क्या, and you know, someone who's smarter than me, brighter than me, I'm happy to pay him his professional fees. बस तू समझता है, तू दिन भर ये करता है, तू कर, I'm happy to give you the money. That's a listed space. I don't do IPOs because IPOs में जो information जो कंपनी देना चाहती है वो बहुत सिलेक्टिव होता है, because वो तुम्हारा पैसा लेना चाहते हैं. So this is called the bigger fool theory. I will find someone, and the biggest fool is the retail investor. वो तो क्या 2 न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, उसका ब्रोकर बोलेगा अरे ये बहुत अच्छा डील है, डाल दो, मटका लग जाएगा. Not my kind. I'm very patient. I'm a value investor. But the reason I can afford to be is because I understand the theory. So if you've read what Warren Buffett says, I may not implement it, but I know my wealth manager is following those same principles. So I'm very happy as far as the listed space goes. To come back to, but listed space जब अपन बात करते हैं तो ये बड़ी mature companies है, you know, जो large caps है, mid caps है, लेकिन ये बनती कैसे? Because 15 years ago, some entrepreneur, some promoter decided, I want to change the world. I want to create a business. Those journeys are much more interesting. Because no CEO of a large company is going to bother to talk to Dr. Malpan. He doesn't even care. But I'm more interested in आज की कंपनी का जो फाउंडर है वो 15 साल के बाद कभी ना कभी तो भी, many will fail, many will flop, all that is okay. But ये जो अपन artificially करते हैं ना, first standard, second standard, third, it's all silly. जो business की जो cycle life होती है, it starts from zero and goes. Now some will die, some will flop. But if you can actually partner with them at that early stage, yes, if they do well, you'll obviously make a lot more money because you put in money at a much riskier stage. Right. Risk and reward go hand in hand. But the amount you learn, because they talk to you, they've raised money from you, and they're still young themselves. So I think it's a complete continuum. We break it up, and I think the breakup is very artificial. But just to address, you have an angel investor जो खुद के पैसे invest करता है startups में. You then have VCs. VC stands for venture capitalists, जो दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी लाइफ होती है 10 साल में हमको एग्जिट लेना है. Then you have PE or private equity. Now as the company becomes bigger and bigger, it requires more and more money. तो VC की जो कैपेसिटी होती है फंड करने की वो लिमिटेड, तो ये प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं. And then finally public equity, which is the listed space. I think as an IVF specialist, मेरे साथ तो बहुत होता है, आप भी करते होगे, वो एम्ब्रियो देख के ना कभी कभी गेस करने की इच्छा होती है कि इसका बच्चा कैसा दिखेगा और ये बड़ा हो के क्या बनेगा. तो आई थिंक जब आप एज एन एंजल इन्वेस्टर देखते हो उन एम्ब्रियोज को, एंड प्रोबेबली यू मस्ट बी गेसिंग इन योर माइंड और होपिंग और प्रेइंग दैट इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग बिग व्हिच चेंजेस द वर्ल्ड. डज दैट हैपन? Like you quite correctly said, the good thing about being an IVF doctor is you're so used to dealing with failure that no matter how hard you work, no matter how good the embryo is, एक बार तुमने embryo डाल दिया तो ऊपर वाला मालिक. So therefore you're used to failure. So I'm very forgiving as far as long as तुम्हारा intention सही था, तुमने जो कुछ तुम्हारे हाथ में था तुमने किया, तो तुम और कर भी क्या सकते हो. Big believer in the Gita. So तुमने तुम्हारा काम किया, success हुआ, very good. The trouble is we take credit for our successes, but a lot of our successes are because of luck.
which we sometimes, and now especially when you invest in large number of companies, जिसको portfolio बोलते हैं, then you realize the importance of luck. कि तुम किसको भी पैसा देते हो तो ये उम्मीद से कि तो ये बड़ा होगा, but most of them don't. And you keep on learning from that experience. You cannot, I'm sure in your own experience, अरे ये तो अच्छा embryo नहीं है, बेचारी का कुछ नहीं होने वाला. She gets a beautiful baby and then such a gorgeous embryo doesn't implant. Who knows any of these things? So I think the good thing, a lot of people ask me, तू तो IVF doctor है, तो क्या बैठ के ये सब investing, तो कुछ समझता भी क्या है? I said, all that's true. I believe I can understand anything. Whether it's fintech or AI, I don't want to do it myself, but I should know enough that an entrepreneur cannot take me for a ride. And that's the advantage of an education, that, you know, when you're a doctor, you've studied hard, you know how to study, you know how to learn. Right. So to that extent, that's fine. But the common denominator, and I think I'm often a better investor as compared to, let's say, VCs, because a lot of VCs are very number oriented, very focused on kitna return aayega, kitna aayega. As an angel investor, because I'm an IVF doctor, I think I'm much more empathetic, because that's the core skill of a doctor. You know, how are you kind to your patients? How do you look at your patient's life? So that's important. Second is, I believe in educating patients, just like you need to educate entrepreneurs. And in India, अपनी startup ecosystem इतनी immature है कि लोगों को कितना handhold करना पड़ता है, कितना सिखाना पड़ता है, term sheet क्या होती है, SHA क्या होता है, what are fair terms, or not. And so we have a lot of educational material on our clinic website and on our Malpani Ventures website, कि कम से कम लोग सीखे कि सही रास्ता क्या है, गलत है, फिर तुम जो अपनाओ वो तुम्हारी मर्जी. So that's the third piece is we're used to dealing with some of this failure because it happens. And the fourth is, as an IVF doctor, we're all entrepreneurs. When you run your own clinic, so you understand the angst of what an entrepreneur goes through. So I think it's been an interesting journey and a lot of parallels. A lot of people looking from the outside don't see the parallels. But when you're actually there, you apply every single thing in one domain to another domain. And that's what I call the T-shaped model in life. And what does that mean? कि तुम IVF करो now, at some point the 150th IVF patient is going to be very similar to your previous patient. तो रात को भी, you know, तुम आराम से कर सकते हो. But the amount of learning you get, the depth you get, the fun is applying it to other areas. And you know, the common denominator with all of us, whether it's any business, is we're all human beings. We're all motivated by two things, greed and fear. I think once you understand that, once you understand how people behave, your ability to be able to apply that to any field is just huge. I absolutely resonate with you on this one. So, in my life as a triathlete and IVF, these are two totally different fields. But I got into triathlon because one of my patients once said, I told her कि आपका IVF fail हो गया, एक और बार try करना चाहिए. So at that time she did not say anything, and while she was leaving, she stood up and said, आपका IVF fail नहीं हुआ ना, आपको कैसे पता? So that's when I realized that, you know, if I fail, like in my first Ironman, I could not do it. I had a DNF, did not finish. I went back again and I did it. So I think that one statement from my patient, and also, you know, if you are just like our patients are putting themselves out there, they're doing something very unfamiliar, painful, and doing it again and again. So I thought that I had no right to sit in judgment and tell them कि आप एक बार और IVF करो, आपको endurance होना चाहिए. Did I have that endurance? अब मैं अपना IVF तो नहीं कर सकती थी, but I tried to do that in the endurance sphere, and I think it fed into my पर तुम ये practice. महात्मा गांधी की कहानी जानते हो? नहीं. एक माँ आई थी और वो बोल रही थी कि मेरा बेटा शक्कर दिन भर खाता रहता है, तुम उसको प्लीज बोलो कि शक्कर खाना बंद करे. तो महात्मा गांधी से ओके, तुम 4 दिन के बाद फिर से आ जाओ. तो वो 4 दिन के बाद फिर से आई और बेटा तुम शक्कर खाना बंद करो, वो क्योंकि तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है. तो शी सेड थैंक यू, लेकिन सर तुम 4 दिन क्यों रुके? सर 4 दिन मैंने खुद की शक्कर बंद की, कि मैं देखना चाहता था कि मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, बिफोर आई हैव द रीजन, the ability to advise someone. And that's exactly what you're saying. So I think much more than just being a good doctor, you're a good human being. And I think that is what I'm trying to say, is that all of us are human beings, whether you're a businessman, whether you're anything else. And as long as we understand that, and that's the importance of spirituality, that you understand कि, you know, जब अपन नमस्ते भी बोलते हैं कि you're saluting the other person. Who are you saluting? You're not saluting Priya. Yeah. You're saluting that part of God which is in you. I think it just helps you step outside yourself, because, you know, we're so fussed about ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है. It helps you step out and
Think पर of the पता है क्या होता है सर, जो मेडिसिन है ना, इट इज़ सो ऑल एनकम्पासिंग, इट जस्ट कलर्स एवरीथिंग दैट यू डू। तो आप शादी भी डॉक्टर से ही करते हो, आपके आसपास भी सब डॉक्टर्स और पेशेंट्स ही रहते हैं, एंड इट इज़ इमोशनली रिक्वायर सो मच इन्वेस्टमेंट कि प्रैक्टिकली अगर आपका कोई दूसरा भी पैशन है, जैसे मान लीजिए मेरा ट्रायथलॉन है, पर मैं कोई बहुत अच्छी ट्रायथलीट नहीं हूँ, मैं बहुत एवरेज या बिलो एवरेज ट्रायथलीट हूँ, क्योंकि अच्छा डॉक्टर होना ही अपने आप में बहुत बड़ा फुल टाइम काम है। अब आप जब जीवन के एक पड़ाव में आप इन्वेस्टिंग में आए, तो आप लिंक्डइन जैसे माध्यम पे, जहाँ पे सारे मतलब इस फील्ड के जाने हुए लोग, जिनका एजुकेशन इस फील्ड का है, जिनका एक्सपीरियंस है, जो बड़ी-बड़ी फर्म्स चला रहे हैं, आप उनको बैठ के कितने अच्छे से सलाह देते हैं। जबकि आप तो डॉक्टर हैं, यू हैव प्रैक्टिकली नो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। So how did you bring yourself to that level that you are able to speak authoritatively on a subject which is actually not your own subject? I think again that is very artificial. If I had to hire a person, I would not hire someone who was qualified from a college in that particular degree. I would hire someone who was self-taught. So tomorrow, if I want to hire a programmer, I will not take someone who's done a BTech from IIT, who's been taught I don't think you can teach anyone anything. I think people have to learn for themselves. The word educare actually means to draw out. It's not filling a vessel with ye mera gyan hai, main teri teacher hu, main tujhko sikhane wali hu. It doesn't work that way. So I think self-taught people are actually far better because you're starting from zero and then you're taking yourself up to a particular this thing as compared to, and because yes, you're right, I need to be self-taught about balance sheets, I need to be self-taught, but the good thing is I don't need to know everything, and no one knows everything, so I need to know enough to be able to say, okay, now I can make a well-informed decision. And you're right. And the good thing about putting it out on Twitter is for every tweet, you're an idiot. You don't know this, you don't know that. You have to reply to those tweets. Then I have to do even more homework to be able to justify, you know what, maybe I'm not an idiot. Maybe this is what's up. And how could I possibly, I'm not an educator, but I can read books written by educators who have much more experience. And I think that's a big differentiator. And I'll tell you why. When you're a teacher, like you correctly said, तुम दिन भर इतना teaching करते हो कि जो historical background hai, why do we teach this particular way, what was teaching 100 years ago, they lose touch with that because तुमको आके attendance लेना है, principal phone करता है, parent complain करता है, मेरा बच्चा fail हो रहा है, तो your head is stuck in the sand, you can't look at the big picture. Because I'm an outsider, my ability to look at the big picture is actually much better. And when I don't know something, I'm not ashamed to say I don't know. That's fine, but I'll figure it out. तो मैं किताब पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा. Maybe I'm wrong, in which case I'll say, yeah, I was wrong. And next time I will do a better job. I think that's fine. Now, you had amazing success as an IVF specialist. You had a very good success as an investor. Now, I see that you are involved more and more into initiatives about giving back. You've recently started an IVF unit in your college. तो उसके बारे में बताइए, क्या है ये माँ IVF और क्यों आपने शुरू किया, इसको कैसे चलाने वाले हैं? So, as a private clinic, your ability to be able to teach or do research becomes very limited. So we realized that. So we said, how do we do it? And अगर तुम आप IITs देखोगे तो वहाँ हिस्ट्री है कि जो लोग पास आउट होते हैं, जो एलुमनाई है, वो पैसा देते हैं कि नई कॉलेज खोलो, नई बिल्डिंग खोलो, which is kind of hard as far as medical college goes. So we want to change that trend. And who better than a doctor to know what the next generation of doctors did? And we also wanted to be clear, हम पैसा देने वाले हैं, हम आपको बैकग्राउंड स्कैफोल्डिंग करेंगे, लेकिन आपको चलाना है. We are very fortunate. The dean of KEM Hospital is very supportive. The BMC was very supportive. It's taken time. Now we think this is a world-class center of excellence. Look at the second-order consequences. Patient care will improve because poor patients can't afford to come to Dr. Malpani, but we can afford to pay for their treatment within the KEM Hospital. So we're going to subsidize all that. We think education will improve because then once doctors have trained in how to do IVF properly, नहीं तो 3 दिन का fellowship certificate कर लो, मैं IVF doctor हूँ, तो मेरे पास आओ, you're just cheating patients left, right and center. So we think then that will change. And once you've created one, we hope other medical colleges will absorb. But what really excites me is the research piece. Many years ago, we wrote a paper on low-cost IVF. And the IVF has become so expensive because we just copy and paste what
अपन एक्सरे जाते हैं, एसआरएम जाते हैं, ये डॉक्टर ऐसा करता है, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, बट इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग परहैप्स फॉर योर पेशेंट्स आर यंगर, दे हैव दिस थिंग, कोई अटेम्प्ट ही नहीं होता है, एंड यू कांट रियली डू इट इन अ स्मॉल प्राइवेट क्लिनिक. Correct. I think the opportunity to do that, to then create stuff, is huge. So we think education of doctors will improve, patient education will improve, we think research will improve, and at some point, like you correctly said, you've done a lot in your life. At some point, you also think about what are called legacies. What do you want to leave behind after you're dead and gone? And this is very much Dr. Anjali's baby. Anjali's always wanted to be, okay, my kids aren't doctors, but how do we make sure that whatever we've done continues? So we have a philosophy, and our philosophy is very simple: put patients first. How does that philosophy then continue in a KEM hospital setting? Then your ability to amplify that. Just imagine then the number of doctors who come up with that DNA. Okay, we need to put patients first. I think the next generation of both doctors and patients will be much better off. So I was listening to Dr. Anjali Malpani speak on the, I think it was the You should interview 100 her. years. Yes. She's far better than I am. Trust me, she's so passionate about what she does. So, you know, the big problem is when patients come to me, they do the consultation. That's fine. After they talk to her, they don't want to talk to me anymore. नहीं Dr. Anjali का हमको तो Dr. Anjali से बात करना. And I completely agree. She's a far better doctor. She's much more patient, much more compassionate. So I learn a lot from her. So, you know, I think that's great because it's a partnership. I think it helps patients because then the men find it easier to talk to me, the Yeah. women find it easier to talk to us. So that works out very well. Absolutely. The one thing that, is most important in our patient's life and our lives are our children. So I was reading about your daughter who trained as an immunologist and then went on to do social entrepreneurship, is also a poet and is now making films. She's moved So- on. Oh, really? Yeah, I'm so happy. Like I said, you know, what's the point in life? You keep on doing the same thing forever and ever. So now she's reinvented herself. She's now become a VC. So she runs her own, and her philosophy is so different from mine completely. We don't agree about anything. I said, I'm very happy you don't agree with me. If you agreed with me, then you know what value would you add? You should be doing your own thing. So Natasha's doing extremely well. I learn a lot from her. I don't agree with her, but I said, "ठीक है, तू करके दे." Who knows what the future is? You know, maybe your thesis is right, and I'll learn from that. Or guess what? Maybe my thesis is right, and you'll learn. But it's a lot of fun. But so I must tell you this. Anjali's done a great job. Very hands-on mom. You know, the thing is when the big privilege we have is that our clinic is here and our residence is here. So you're always there for your kids all the time. And she was very hands-on. And then when Natasha, it was expected. I'm a second generation doctor. वो भी doctor बनेगी. So she got into medical college. वो, you know, जो कोई form, admission form. And then Anjali went with her and said, "Are you sure you want to be a doctor?" And she thought about it. And she said, "You know, not really, but I'm doing it because you expect." I said, "Please don't." You know, we became doctors because we were passionate about it. If you're not passionate about becoming a doctor, you'll make your life miserable and the patient. She walked out. And then she said, "Now what?" So she didn't really have a plan B. So then she did science in Jaya and she got a scholarship. She went to Oxford, like you correctly said. So I think, you know, people are finding themselves. And the good thing is she's very confident. Then she did a Oxford, she did a Cambridge, she went to Stanford, she did her MBA. So capable of doing anything. But the important thing, like you said, is that at some point I didn't want to be irrelevant to her life. बिकॉज वो तो बोले तू तो डॉक्टर है, तू क्या समझता है, मैं तो स्टैनफोर्ड की MBA हूँ, मैंने ऐसे किया वैसे किया, मैं millions of dollars बात. I said, you know what, I need to keep up. And so you first learn from your parents. Yeah. Then you learn from your friends and your peers. But I think you learn from your children. I would put it a little differently. You know, the first half of life you're trying to impress your parents, and second half you're trying to impress your children, and it's a constant struggle. And you might impress your parents, but your children are really difficult to impress. True. Very difficult. Hopefully, my grandchildren will be easier to impress. We'll see. But I think the good thing about grandchildren is grandchildren and grandparents can gang up on this thing. We'll see. Yeah, but yes. So again, I think to your point, it's good that she has a certain way of thinking based on, you know, because we're growing up in front of her. These are what our values are. This is what our philosophy is. But I'm actually very happy she's not a doctor because she found her own path. If we had forced her down a particular path, she would have been miserable and she would always have made us miserable. कि तुमने बोला इसके लिए मैंने किया, and look how miserable my life is. Now she's sorted. So she's taken ownership of her life. And that's all I want. I want every student to take ownership of their life.
मेरी जिंदगी है, मैं खुद के डिसीजंस खुद बना सकता हूँ. The question which I really wanted to ask you, many of very successful doctors in Mumbai or in the country are actually second generation doctors. So people who are first generation doctors, they always find that they're, almost 5 to 10 years behind those who are second generation, because the second generation doctors have their path laid. You can also call it nepotism in professional circles if you're very active in professional bodies. But what is your advice to somebody who's a first generation doctor and who wants to be successful? I think that's a great question, and I agree. One thing I tell everyone: life is not fair. Don't expect it to be fair. But then you're just going to make yourself miserable because you're always comparing yourself. He's better looking, he has more money, this, that. So what's the point? Play to your strengths. And you need to identify your strengths. And trust me, you have strengths. You may not have a father who's a doctor, but you'll have other strengths. Right. And I'll tell you what I find interesting. All the interesting things happen at the boundary or the cutting edge of any field. So you've done medicine and you're not a second generation. But maybe your graphic skills are great. Maybe your communication skills are great. Then if you're a first generation doctor and you learn how to do a podcast, just for an example, you will then have a head start as compared to a second generation doctor who's doing the same thing his father and mother did, because everything was served to him on a platter. So there is now that opportunity for you to be able to leapfrog. So rather than keep on complaining ki, uske aisa kiya, waise kiya, find out what makes you special, what is your competitive edge, what gives you the right to win, and take advantage of it. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नेपोटिज्म वाला, बहुत बच्चे इस बारे में अपसेट रहते हैं कि मेरे क्लासमेट के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, उनका नर्सिंग होम है, बनी बनाई प्रैक्टिस है, उनको हर जगह एंट्री जल्दी मिल जाती है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सब उनके फ्रेंड्स रहते हैं. आई ऑलवेज टेल देम कि अगर लाइफ में 10 चीज़ें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, तो भगवान हर जन को 1 या 2 ही दे के भेजता है. तो वो उनकी स्ट्रेंथ है. 8 चीज़ें उनके पास भी नहीं है. जो 8 उनके पास नहीं हो सकता, उसमें से 2 आपके पास हो. तो जो आपने कहा है, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, डोंट क्रिब, बिकॉज अब जो डिजिटल एज है, इसमें इतने सारे स्किल्स, जैसे आपने बताया, मे बी डिज़ाइनिंग, मे बी स्पीकिंग, मे बी कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स, देर आर 1,000 डिफरेंट स्किल्स विच कैन बी योर स्ट्रेंथ एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू. अब जो पहले कहते थे ना कि आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है, बट अब आपका नेटवर्क तो जितना बड़ा आप चाहें हो सकता है. आप पूरी दुनिया में किसी को भी अपने नेटवर्क में ले सकते हैं. Anybody is just one DM away. So I think that is a very important message. So there are 2 things. There is something called a growth mindset and a fixed mindset. And a fixed mindset is, this is all I'm capable of. Like you did the triathlon, then you came from a growth mindset. If so-and-so can do it, so can I. You took that inspiration. And that is a big problem. In India, we come from a scarcity mindset. पैसे कम है, ये कम है, हम poor country है, फलाना दिख. Should come from an abundance mindset. Like I said, there is no shortage of anything. And the magic source is your human capital. Money is a commodity, there's no shortage of that if you know how to tap it. But you need to earn the right to ask for that money. No one's going to come and give it to you just because तुमने MBA किया, कि तुमने ये कुछ किया. And I think that's this thing. And the good thing then is when you have to do it for yourself, you actually have to prove yourself. And one thing I'll tell you, I actually prefer entrepreneurs who are not from IITs and IIMs because they have a chip on their shoulder. They need to prove to the world. हम किसी से कम नहीं है. Just because I didn't get the maximum marks in that JEE exam doesn't mean that guy who got into IIT is any better than me. They're more hardworking, they're more diligent. Huge advantages. There's one more aspect which you feel very strongly about and you do, and that is corruption in our public spaces. So, what is your opinion? अब वो इतना common हो गया है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है, या सोचते भी हैं तो हम इसे बड़ा normalize कर देते हैं. So, what are the things that you are doing about this strong feeling that you have? Tell us more about it. So, one is short term and the second is long term. On a short term, it's an uphill battle. I don't think things are going to change in my lifetime. That doesn't mean I shouldn't try. Not trying, I think, is the worst thing because then effectively you've given up. Being silent is the worst thing. Keeping quiet, it's not me, मैं तो नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ हो रहा है, सब करते हैं. All those are sad justifications. So, which is why when you say things publicly, you have to live up to it. I'm a big believer in citizens being able to improve stuff. We're not powerless. We're not helpless. We're only powerless because we think we're powerless. The moment you change that approach, there are 1,000 citizens for one government officer. Why are we not playing to our strengths? And that's where the technology piece comes in.
which is why we fund projects. There's an empoweredindian.in, there's Indian potholes. These are daily problems we face, but our voice doesn't reach anywhere. And that's because we've kind of accepted, politician आएगा, promise करेगा, vote लेगा, और फिर 5 साल के लिए हमको भूल जाएगा. But that need not be there. So I'm still optimistic, but uphill battle. And I think long term, like I said before, if we can teach students to stand up, to develop a backbone and a spine. Where does your backbone and spine come from? When you think for yourself. This is your most important. Unfortunately, in school, you kill that backbone because teacher ने बोला करने का. जो teacher बोलता है homework, drill, mindless. No one ever respects the student. You do because I'm telling you to do. Why do I need to study this? Why do I need to know when Aurangzeb was born and when he died? Because ये परीक्षा में आने वाला है. Because मैं तुमको बोल रहा हूँ. That's the way parents also treat. And I don't think that's going to be a quick change. But I think that change will happen because now everything's available on your screen. And then I think once students get that confidence, they'll push back, they'll ask questions. Then by the time they grow up and become adults, I think things will change. I'm the eternal optimist. Sometimes I think things can't become any worse. So the last and most important thing that I wanted to discuss with you, you've had several brushes with the law and the courts. So there was a time where probably you promised guaranteed results in IVF and the MCI came down upon you and suspended your license. So on one hand, you talk about ethical advertising and, not promising too much. So what do you have to say about what happened? Lots. So we actually won our case finally. So I think that got completely distorted. And like you correctly said, the moment you're successful, there'll be lots of other doctors who will want to pull you down. That's bound to happen. And the trouble with the medical council, as you know, is highly political body, and that's the only thing they really care about. So what did we promise? We promised that if you do not get pregnant, we will refund all your money back. That was what the promise was. This is very ethical. There's an American Society of Reproductive Medicine paper. Guidelines. These are called shared risk programs. Yes. What is the patient's biggest worry? मैं इतना सारा पैसा खर्च करूंगी, कुछ होगा नहीं, and at the end of the day, तो बच्चा भी नहीं मिला, मेरे का ये नहीं रहा. Here, you require a lot of confidence to be able to walk your talk, to put your money where your mouth is. Patients were so reassured because they'd done 3 cycles, 4 cycles, everything had failed. I said, I have skin in the game. If I don't get you pregnant, I'm going to lose. That patient's confidence level increased, but it got distorted deliberately. It got distorted that you're offering a guarantee that the patient will get pregnant. That wasn't the guarantee. The guarantee was we will refund all your money if we fail to get you pregnant. But when it's political, everything can get this thing. So, ठीक है. But I learned a lot from that experience. आप जीत गए कोर्ट में? Court yeah, of course. Because it was very clear that what we were doing wasn't anything wrong. Absolutely. We want this thing. But like I said, when you have people... and it's a very uneven battle. Basically you're talking about the medical council and you have all these people and stuff like that. So it's a hard battle. But I think the important thing about all these battles is you learn a lot. So just to give you an example, I now understand how the legal system works, doesn't work. We filed a lot of PILs. So one of the reasons we filed, there's an ART PIL we filed, there's a EdTech PIL we filed. Because again, and those are very painful, let me tell you, it's no joy. Because उसको भी तो हियर डेट मिलने के लिए 3 साल चाहे whatever else it is. I said ठीक है, कोशिश तो की, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन I did whatever I could as a citizen of this country. Whether it'll actually see light of day, I don't know, but I'm optimistic. ART Act जब आ गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हम सब के लिए. प्रैक्टिस भी जिस तरह से करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े. आपने PIL डाला कि जो एम्ब्रियोज हमारे पास रखे हुए हैं उनको हम दूसरे कपल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. एम्ब्रियो अडॉप्शन जिसे कहा जाता है, बहुत सारे देशों में, US वगैरह में ये कॉमन होता है. और पहले भी जो गाइडलाइन थी उसमें एक ऑप्शन था कि अगर एक कपल को बच्चा हो गया है और वो अपने एम्ब्रियो दान करना चाहते हैं तो वो अलाउ होना चाहिए. इसके पीछे आपका क्या थॉट है और क्या रिजल्ट निकला जब आपने कोर्ट में एप्लीकेशन किया? So basically, the court said, there is a reason why this law was passed. Go back again to the ministry and ask them what their representation is. And the trouble is, as doctors, we understand our patient's pain. We understand the pain of abandoning an embryo and letting it get wasted when that embryo could have become a baby. So you will not waste blood. You will not. Why will you take these double standards? But people, let's be honest, it's a bureaucracy. It's a Ministry of Health. It's run by bureaucrats. And they're not going to apply the mind. They're just basically going to copy and paste whatever else it is and say, no, this is not right, this is not right. So, ठीक है. What
at the end of the day, when I'm on my deathbed, I will have peace of mind. I tried to improve things. Whether they finally, the odds are stacked against you whenever you try doing something like this. But at least you tried. So again, for the EdTech, what did we say? Okay, I have my own opinion about commercial coaching classes. That's fine. That doesn't matter. We said allow commercial coaching classes, but only allow them to charge a monthly subscription fee. Right. Because agar ek month mein, if you're not happy, the student can say, I'm walking off. Then obviously your teachers will be on their toes. अरे यार एलन ने अच्छा काम नहीं किया तो वो कल आकाश के पास जाएगा, आकाश ने किया तो फिजिक्स वाला के पास जाएगा. You are putting the student first. And that's the one thing I'll tell you. In all these three things which we do, the hat we put on is in medicine, it's patients first. In education, it's students first. And in business, it's the user first. I tell all my entrepreneurs, don't care about me as an investor. Just delight your users. If you delight your users, everything will fall into place. Your business will do well, and I'll make a lot of money. So don't get distracted by anything or everything I say. And it's exactly the same message I would tell a doctor. It's the same message I would tell someone who's trying to teach someone else. Don't force the student to learn something he's not interested in. He'll do a bad job. He'll get stressed out. He'll get anxious. He'll start thinking of himself as a dummy, and you will start thinking of... It's like teaching a fish, how to climb a tree. How is that going to work? But that is the way our education system is designed. Oh, now you're in the 8th grade. Tumko ye seekhna. You're in the 9th grade. How does that make any sense? And the beauty about all these AI tutors is everything is so personalized. You're allowing the child to play to their strengths. And I'll tell you another interesting thing. People don't know this. One of the largest, most progressive experiments in education is the NIOS. This is National Institute of Open Schooling. Just think of that word. By definition, schools are closed. This is open schooling. Many of our students from ILM actually are NIOS students. I think it's brilliant. But it's so bad, again, it's so sad that, you used a particular model in those days where you would courier exam papers and stuff like that. There's so much technology which can be done so much. I would have said NIOS should become an aspirational board, even better than IB. Correct. But अभी तुम्हारे ये क्या है? NIOS कौन करेगा जो school dropouts है, जो दूसरा कुछ नहीं कर सकता. So that's ridiculous. The NIOS can be cutting edge because you can change your curriculum, you can make it online, you can do whatever, you can offer so much. Physical schools have so many limitations. The NIOS has no limitation. And actually the children who are studying through NIOS, they have a lot of time. And also they usually come from economically marginalized populations. So they have this urgency to learn some skills which will help them, eventually find some work for themselves. But the other group who do NIOS are all these gifted children. So if you look at all these chess grandmasters, because they are or these much ahead of tennis, then they can't afford to spend more than 2 hours learning. So उनको तो 8 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस है. But the beauty is वो 2 घंटे में उतना ही सीखते हैं जो बाकी का बच्चा 8 घंटे में स्कूल में सीखता है. So because they're highly motivated. That should become the default. That's our hope with the community micro school. That the community micro school, people want certifications. Why they want certifications, I don't understand. But ठीक है boss, चाहिए तो ले ले. So then do the NIOS. Then I think you'll see such... And the point is the infrastructure already exists. The NIOS is recognized by every college. Just imagine how much you could do. Then your entire pecking order would change. Right. Then you would say kids will learn from real life. Kids will learn by being coached, mentored, guided by parents, grandparents, the real community. Because guess what? In 2 hours, I'll cover everything. Now you're locking your kids up in school for 8 hours. You know why you're locking them up? Because parents want to be doing other things. Yeah. Schools are just expensive childcare centers. Honestly, it's become like that. No one really cares whether that child is learning anything or not learning anything. It's either become a status symbol for all these very, very rich. मेरा बच्चा IB school में जाता है, मैं साल का 12 लाख देती हूँ. All that stuff. What are you learning? Come on, give me a break. And as compared to some of these other things, you need to go, but people don't go. There's no root cause analysis. There's no what is my kid learning? Why is my kid learning stuff? And I think that's partly because all the current generation of parents has been, I'm sorry to say, so brainwashed by their own schooling and their own tuition classes. Right. They just don't think beyond that. The irony is when they go to work and they come across a problem they can't solve, they'll open ChatGPT and why shouldn't your kid do that? And by the time your kid grows up, ChatGPT is going to be version 10, which is going to be 50 times better. मेरी एक थियोरी है इसके लिए कि जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं जो छोटे बच्चों को देखते हैं,
So how do you evaluate how is a good pediatrician? A good pediatrician is not the one who can heal the child faster. It is the one who can convince the mothers beautifully. So same is with the ed tech, because अगर आपकी कोचिंग है तो आप उस मदर को उसके बचपन में लेके जाओ, क्योंकि वो आईआईटी में पढ़ी थी, वो कोटा में 3 साल रही थी. सो उसको अगर आपने कन्विंस कर दिया, देन यू कैन सेल एनीथिंग फॉर दिस चाइल्ड हु इज अ चाइल्ड ऑफ टुडे. वो ही इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ yesterday, but the entire system is designed to look at parents, not at Because children. parents don't respect the kids. तो क्या समझता है? क्योंकि पेरेंट्स पैसा देते हैं, तो जैसे जो टॉयज होते हैं, दे आर नॉट डिजाइन टू डिलाइट द चिल्ड्रन, दे आर डिजाइन टू एल्योर द पेरेंट्स हु आर गोइंग टू पे फॉर इट. सो एज यू सेड, इन एडटेक आप सोचते हैं ना कि इट हैज टू बी द स्टूडेंट फर्स्ट. So unless we get rid of this mentality of pleasing the parents who are already outdated, they have had, education which was okay 20 years ago, not now. So I think that is the whole problem. And I think the policy makers, जैसे अगर आप मोदी जी से मिलेंगे तो आप एजुकेशन के बारे में क्या उनसे पूछना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या उनसे कहना आई वुड चाहेंगे? से इंडिया की जो खासियत है वो अपने बच्चे हैं. और तुम बच्चों को परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम पे चर्चा, ये सब अपने जमाने के लिए ठीक था. दैट्स नो लॉन्गर. तुम ये स्केर्सिटी माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, तुम कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो बच्चों के में कि 100 बच्चे हैं लेकिन एक ही कॉलेज की सीट है. हाउ इज दैट फेयर ऑन एनीवन एट ऑल? एंड हु गेट्स ऑल द प्रिविलेजेस? द रिच किड्स, Right, बिकॉज दे कैन गेट प्राइवेट right. ट्यूटरिंग. तो बाकी लोग का क्या होने वाला है? एंड आई थिंक दैट्स एन ऑब्सोलीट मॉडल. वी नीड टू चेंज दैट कंप्लीटली. सो द राइट वेज, एंड आई टेल यू, इट्स स्टार्टिंग टू हैपन. बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं जो वो स्कूल तो जाते ही है, लेकिन it's called the flipped classroom model, which means they're studying in advance what the teacher is going to teach the next day, because the textbook is there, everything is there. Right. तुम चैट जीपीटी को सवाल पूछ लो, फिर जब टीचर क्लास में सिखाएगी ये किसको समझता है, मिस मुझे मालूम है, मिस, the teacher is also going to be impressed and say, how come you know so much? Which tuition class you go to? I don't go to tuition class, I go to अपनी पाठशाला, I learn from an AI tutor. टीचर का भी ट्यूबलाइट बजा है. पेरेंट भी बोलेगा ये तो फ्री में हो रहा है, फिर मैं क्यों फुकट के पैसे दूं? पेरेंट्स आर आल्सो नॉट स्टूपिड. बट अगेन इट्स अ लॉन्ग गेम. आई डोंट थिंक एनीथिंग गोना हैपन विद इन 1 year or 2 year, व्हिच इज व्हाई वी हैव टेकन ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज. वी वुड से दिस, सब तू बड़ा थियरी मास्टर है, कोई सुनने नहीं वाला है तेरी. आई सेड ठीक है, पेरेंट्स आर स्केप्टिकल, आई गेट दैट. सो आई सेड लेट्स स्टार्ट विद व्हाट डू पेरेंट्स वांट. Parents want their kids to pass an exam with the maximum number of marks. I think marks are rubbish exam. Who cares what I think? Okay, fine. This is what your challenge is. You know what I'm going to do? I'm going to prove to you that your kid can pass this exam without going to a tuition class. How will I do that? Which is the toughest exam for school IIT. kids? JEE. So now we've created an Eklavya AI tutor, which is free and will always be free, so that students can learn for, this is Socratic teaching. It's not like lecture suno, passive learning, ye karo, kuch nahi. Socratic teaching is personalized. It will ask you questions, help you to find the answer, available instantly. And we've created a virtual classroom. So you don't need to study alone. You can invite 2 of your friends, all virtually, or you can study as a group. I think if we can prove that, we're doing lots of other things. We're doing a 100 this thing batch experiment where we're going to give 100 students who are bright अपना PCs and see how many of them. Then we will have bragging rights. फिर तो हम बोल सकेंगे मेरे बच्चे ने AI tutor देख के IIT exam crack किया. हाँ तो शायद Dr. Malpani, what you're saying next. So we'll see. We need to learn actually from the edtech companies. Like you Correct. correctly said, how do the edtech companies influence? They influence the parents. How do they influence the parents? By bragging about their toppers. Results. And they take advertisements. I'm not going to waste money on advertisements. I want my kids' work to talk for themselves. If I get enough of these success stories who've cracked, who have a website, I think then people say it's stupid to waste money. And commuting is no longer a joke. You put your kid in a school bus, and whether that school bus will come back or whatever else, who knows. जब घर बैठे बैठे AI ट्यूटर आके तुम्हारे बच्चों को सिखा रहा है, 2-3 पास के बच्चे Right. ले लो, सब साथ में सीखो. I'm very optimistic. I think things are going to change faster than you imagine. I would like things to change yesterday. So I don't know about that. But ठीक है, okay, we'll keep on trying. Absolutely. It was such an amazing discussion, and I think there were at least 10 more things that I have in my mind. But because there is a constraint of time, I think we have to stop. But you have to tell me your closing thoughts on everything that is important to you: IVF, investing, and philanthropy, all three.
I think so. The good thing is, when you talk about financial literacy, there's something called asset allocation, which means you need to decide how much of your Hmm. money do you want to put in all these various places. And equally importantly, you need to decide what the end goal or that purpose of that money is. And fortunately, I'm very clear about that. So, as a doctor, I would never invest in a startup. Professional income is hard earned, blood, sweat, tears, sleepless nights, never. But because I get much more money on the passive income in the listed Yes. space from the public markets, then that money is money which I'm willing to experiment with in other these things. So that's given me so much freedom to be able to explore things which interest me. So I don't need to say मैं अपनी पाठशाला चलाऊंगा with then I have to go to a begging bowl with Correct. तुम CSR funds दो तुम हाँ. इससे पैसे लो तो I don't need anything from anyone. People have offered. I say I don't want any donations. I want you to come and inspire my kids. I Hmm. want you to tell my kids, hey, you guys are doing a great job. I want you to help me open more Apni Pathshalas. We have 120. We want to Hmm. open at least 1,000. We think that's the tipping point. If there are 1,000, then this will take on a life of its own. So, therefore, to that extent, the amount of freedom which the Money investing gives in the you. Yeah. listed space has given me, then I can apply that to the startup space. Hmm. Because honestly, the only way to make money in the startup space is not to invest in startups. I'm not kidding about this. I'm serious. Because 90% of they're going to fail. Let's be honest. तुम कितना भी करो बेचारे fragile है 10 साल लगते हैं कुछ करने को तो you need a long term perspective. So the money you should invest in startups and a lot of people do it for the wrong reasons. Oh, it's sexy, it's cool. Lenskart ने ऐसा किया वैसा किया. Don't fool yourself. So the only money you should invest in startups is money which you can afford to lose without losing sleep over. And fortunately, because the listed markets have been so kind, that money has Hmm. kept on growing. So I think that's fine. But the real joy which I get, like you correctly said, is, often the first phone call is to the Apni Pathshala founder. The last phone call is to the Eklavya. आज क्या किया Hmm. आज मैं क्या ट्वीट कर सकता हूँ अपन कल के लिए क्या कर रहे हैं Right. give me so much So it's seeing your babies grow and come it's into the life of their own. I think you put it so well absolutely right that gives me joy. एब्सोल्युटली. आईवीएफ में अभी भारत में टॉप 3 अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या है जो आपको लगती है? तुम सिर्फ 3 करने वाली हो मैं तो तुमको 10 बताने वाला हूँ सो आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि हाँ हमारा सक्सेस रेट 99% है अरे बैड लक तेरा नहीं हुआ एंड जो भी कोई पेशेंट आता है उसको आईवीएफ में कन्वर्ट करते हो और फिर किसके अंडे रहते हैं किसके स्पर्म रहते हैं इतना छिपा छिपी करते हैं आई थिंक ऑल दिस इज गोइंग टू कम टू सच अ बैड एंड बिकॉज कोई आईवीएफ क्लिनिक को आजकल रिस्पेक्ट नहीं करता है सबको मालूम है बहुत सारा गोलमाल हो रहा है एंड आई ऑल्सो टेल यू व्हाट द फ्यूचर इज parents are now going to do DNA fingerprint and then they're going to find out there was something wrong. Someone is going to sue and at some point now आजकल लोग sue नहीं करते इंडिया में ज़्यादा because of the process. एक बार वो हो गया ना तो सबकी पोल खुल जाएगी. We'll see. अब जो हो गया है आईवीएफ का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है. ये जो एक स्पेस थी इसको कमर्शियली देखा जाता है और बहुत सारे आईवीएफ क्लिनिक्स के चेन्स खुल गए हैं. वो कहते हैं हम मैकडॉनल्ड जैसे चेन्स हैं हमारे यहाँ होगी एक जैसा इलाज मिलेगा. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर पेशेंट अलग रहता है तुम अगर सबको वही स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल देने वाले हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी वैसे ही आने वाले हैं ये जो असेंबली लाइन ट्रीटमेंट है कोई पेशेंट वैसा चाहता नहीं है पेशेंट्स नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन ये क्लिनिक्स में तो तुम जाओ मंडे को ये डॉक्टर मिलेगा ट्यूसडे को ये हम्म. मिलेगा वेडनेसडे को कोई दूसरी कहानी बोलेगा थर्सडे को तो वो सब तुम्हारा नाम भी भूल गए हैं दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट वेल तकलीफ क्या है कि लोगों को लगता है कि इसमें इतना सारा पैसा बन सकता है और एक बार तुम सरस्वती को बेच देते हो और उसकी जगह लक्ष्मी को करते हो तो किसका फायदा नहीं होता है शॉर्ट टर्म तो ठीक है पैसे बहुत सारे पैसे खरीदने के पैसे बनाने के तरीके हैं ये सही तरीका नहीं है इंडियन हेल्थ केयर स्पेस में अगर आप बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स देखेंगे सारे के सारे प्राइवेट इक्विटी उनमें इन्वेस्टेड है और जब प्राइवेट इक्विटी आता है तो उनका अपना एक टाइमलाइन उनके अपने खुद खुद के फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं और अब अगर एक तरह से देखें तो अगर आप एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए तो आपका पैसा विदेश जा रहा है. क्या इससे प्रैक्टिस चेंज हुई है? बहुत तो बेसिकली इंग्लिश में हम बोलते थे डॉक्टर्स आर आइदर नाइट्स नेव्स और पॉन्स अ नाइट इज अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर ये डॉक्टर मेरे सब कुछ ठीक कर देगा अ नेव इज अ चीट अ क्रुक जो पैसे अपने से बनाएगा कट प्रैक्टिस करेगा खुद के ये फॉरेन जाके ट्रिप करेगा एंड अ पॉन इज समवन हु हैज नो माइंड Clue. ऑफ
जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बोलेगा मुझको वो करना है, बॉस मेरे भी बच्चे हैं, मुझको भी उनको कॉलेज भेजना है, ये पापी पेट का सवाल है, और बाकी सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा. एंड आई थिंक जो नाइट्स है वो इतने कम हो गए, सो हाफ द डॉक्टर्स आर नेम्स एंड द अदर हाफ अपॉन. जो अपना जो प्रोफेशनलिज्म का जो ये रहता था कि नहीं, आई एम अ डॉक्टर फर्स्ट, आई विल पुट माय पेशेंट फर्स्ट. ऑनेस्टली द ट्रेजेडीज वी सोल्ड आउट. एंड टू योर पॉइंट, ये पैसा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, I don't think that is good. We're becoming very Americanized and we're all going to pay the price. आज के health insurance की, you're not going to be able to afford to buy health insurance. And there are better alternatives. तो जो अपन पुराने जमाने में जो ये जो P players है ना, they used to call them mom and pop shops. They used to call it pejoratively. Those are actually much better. A 50-bed nursing home in a community is far better for 90% of medical problems. What are medical problems? बुखार आया, cesarean है, hernia surgery, 90%. And वहाँ तो तुम्हारी personal relationship. Correct. 50 beds is the sweet spot because everyone knows everyone else. So there's that trust, there's the word of mouth. You don't need to waste money on advertising and corporate and stuff. You're Correct. playing the long game. And I think that's going to come back. And I think at some point people will realize that. I don't know how soon it will happen. But unfortunately, we pick up all the bad habits from the Americans because everyone just wants to make a quick buck. अब आप दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में जब जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी स्टैंड अलोन नर्सिंग होम जो एक डॉक्टर कपल रन कर रहा है, वो अब बचा है. अब हर जन ने सेल आउट कर दिया है. वो खुद एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में थोड़े समय के लिए कंसल्टेंट बन गए हैं. और अब जो फ़ैमिलियरिटी, जो कम्फर्ट था, जो एक नेबरहुड के एक प्रैक्टिशनर का था, वो अब खत्म हो चुका है. Sad. And I'm hoping that someone will reinvent a business model where these 50-bed hospitals can be extremely profitable. So I'm hoping that will happen because see, all these things are cyclical. You know, वो fashion आता है, सब लोग ये करते हैं, then you realize this is not working out well. Then someone will come up with a better model. Someone will come up with a better model. I'm very hopeful that that will happen. And there are many reasons why. Real estate is expensive. Getting permissions is expensive. So I think there's a list of problems. But I think these are all solvable problems. Absolutely. So when I made Her Health, it's a woman and child hospital entirely run by the doctors, no investors, nobody funding us. It's entirely on a bootstrapped hospital. So what do you think should be the future for hospitals like Her Health, which are individual doctor driven 50-bed hospitals? I think that is the future because I think the reputation you will have in the community, you know, these other hospitals can do what? They can advertise, they can lure, they can have call centers, they can offer special deals. None of that creates loyalty. The difference is you're playing the long game. These guys are playing the 10-year game. 10 years में हमको exit करना है, फिर you know बाकी लोग बाढ़ में जाए. So again, but it takes time. I think the biggest problem is people are not willing to be patient. People want instant results. मैंने पैसे मार्केट में डाले, मुझे डबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. You have to be realistic. And if you're not willing to play the long game, and unfortunately, I think that started to happen because now we're starting idolizing all the outliers. अरे 4 साल में उसने unicorn बना दिया. How often does that happen? And what about the other 1,000 entrepreneurs who started with him, all of whom who failed? So you need that sense of balance. But I think that is the right model, and I'm very sure it will come back. But इस मॉडल के लिए what is it in future for this model? Should it go the IPO way? Should it get funded? क्या करना चाहिए to grow Her Health? I think this is a big mistake we make. I think we kind of treat. The problem is everything you read about business is paid for by press releases and business journalists. And what do you think they're going to pay for? To make themselves the hero. तुमने हमारे से पैसे लेने चाहिए और हम तुमको डबल करेंगे, हम तुमको ये सब ख्वाब बताएंगे. They're all terrible partners, let me tell you. They'll make you do all kinds of ethics. तूने सिर्फ 50 साइकिल की, तो नेक्स्ट टाइम 60 साइकिल कर. तेरा एक ही सेंटर है, तो 3 सेंटर क्यों नहीं? तू कितना भी काम कर, this is not good enough. So you're never going to be able to keep them happy. उनके पेट कभी भरते नहीं, which is terrible for quality of life. A far better business is what is called a lifestyle business. Now, VCs look down on a lifestyle. I think a lifestyle business is great. It creates the lifestyle you want for yourself. And then you can focus on doing what is ethical, what is right, what is right for the patient. So I think it's just, that's absolutely the right way. There's an entire movement called compassionate capitalism. I think we've swung towards the kind of capitalism which is heartless, which only cares about making money. I think that's fine for some things. It's not fine for education and it's not fine for healthcare. I honestly believe that. And I think we'll come up with better models. Absolutely. And because I think the only metric they are interested is in growth.
But growth to the point, it's like a cancerous growth. So you really cannot, growth also has to be regulated. It has to be in a direction to be fruitful to the in sectors like education and healthcare. The trouble is that they have regulatory capture. That basically they can then design, because you can manipulate this thing, Yeah. and then all these guys they'll define the laws and regulations in such a way that it is impossible for the individual doctor to practice. Not because that individual doctor is not doing a better job, but because these guys have bribed and changed the policy in such a way that that individual doctor's life is now so full of paperwork that they cannot cope Yeah. anymore. It's already happened in the US. I think the experience of the average patient in the US healthcare system Terrible. is terrible. It's going to become just like that in India. And the writing's on the wall. And yet we're choosing to do nothing about it. We'll pay the price. Right. You funded health super health. So what was the logic behind? My daughter did. I told you. Oh. Both of us did. But I think Super Health is a great model. And I think if that succeeds, then that again will show. Now, I would have been much happier if it succeeded without taking investor money. Because the moment you take investor money, then it's very hard to answer. So what two does masters. Super Health do differently for all of us who don't know about it? So Super Health is a boutique hospital. It's very focused. They pamper patients. We will put patients first. It's a great world-class experience. It's like friendly. It's a community. So it's like, I would say, a mom and pop hospital on steroids. Because the real honest truth is doctors are not very good at handling businesses. They'd rather not be handling businesses. मुझको तो patient देखना है, मुझको मेरी surgery करनी है, बाकी सब बाढ़ में जाए. So you need to marry some of that stuff. So I think some of that will happen. Maybe not Super Health, maybe someone else. People are quick copiers. The people will copycat that model, and hopefully doctors will learn from that model. Right. So this is a far better way to do it. So I'll copy all their patient hospitality experience. Correct. Because I think the specialty is the hospitality which they provide, Right. which often regular doctors Are don't not care able about. to. Are not able. Absolutely. But I've seen the Her Health videos, and I think you're doing a good job. So I think more and more people will hopefully. Can I tell you one thing? Do you know about Arvind Eye Care? Yeah. The one healthcare organization in this country which I respect beyond anything else is Arvind Eye Care. Because Arvind Eye Care caters to everyone, whether you can't afford it, whether you can, it's self-sufficient, it's frugal. You should spend 3 or 4 days. I mean, it's a brilliant model. They do one thing and they do it extremely well, but they backward integrate, they do everything else. I think Arvind Eye Care is the model which doctors should be. But the tragedy is the Arvind Eye Care model is studied as a business case study in Harvard Business School. Most Indian doctors who are not ophthalmologists have never heard of Arvind Eye Care. And I think that's such a shame, because that's such a great example of a community base. And I think that's something you should consider doing, Dr. Priya. You should invite non-obstetricians. You should invite cardiologists to Her Health for 2 days, 3 days. These are our operating systems. This is how we work. It's not going to threaten you. If some cardiologist from Gujarat comes and sees your hospital, it's not going to make a difference. But those are things you should seriously consider, because now you have a playbook, what's called an SOP, or a standard operating procedure, how to greet patients, how to hire staff, and it's hard. Yes. And people are scared to do it, but you've learned the hard way. And I think then if you open source it or you invite people, I think then your impact will be much more. Then you're no longer just one hospital in Bhopal. You're effectively creating a movement. I'd strongly encourage you to do that. Absolutely. I think that is the one thing that keeps all of us awake at night. What can I do tomorrow to increase my impact? Because, as you age, you understand that your days are numbered. Nobody is going to live forever, except through our IVF children, maybe, or the work that we do. So I think that is really meaningful. That is a lot of food for thought for me. You should be writing books on managing out this thing. Again, and these days it's become so easy. Hire a young intern who's done an MBA, who will then step back, tell him to spend 1 week in Super Health. Right. How does Super Health different from Her Health? What do they do differently? Get him spend these things, and these are the things which are easy. You don't have to copy everything they do. Absolutely. But there's so many things. So we need people like you to actually make. You're asking me that question. The trouble is that PE players will copy other PE player models, which is very easy because they have all the head office. Why don't we have more people like Dr. Priya saying her hospital is actually a far better model? Please come, please see what we're doing. And no one's ever going to take your patients away from you. I think that's the thing you should really consider doing. Absolutely. That's an amazing idea. I know a little about Arvind Eye Care because they do a lot of research.
the most number of prize winning papers are from Arvind Eye So in they're great Indian. for doctors because the Yes. volume of work which they offer. एक बार तुमने एक साल में अरविंद आई के कर लिया ना तो तुम आंखें बंद करके their results are Absolutely. as good as anywhere, better than anywhere else, and they do it for a fraction of the cost. So Arvind Eye Care has defined the right to win. A great book written by the founder. He started at the age of 60. You know, tu bol rahi hai na, I started by this thing. So he started way after you. And look at his leg. I think that's. But I always criticize the Arvind Eye Care people. I said, you've done a great job for eye care. Why hasn't that model been replicated in other specialties? And the whole approach is, you know, this is what we do. We do it very well. Thank you very much. Again, I think that's a lost opportunity. So that gives me joy. Absolutely. So I think the unique perspective that an IVF specialist has, जो हम लोग जब IVF करते हैं तो हमें एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है. बाकी जो लोग डॉक्टर्स होते हैं वो बीमार लोगों को ठीक करते हैं, थोड़े दिन याद रहते हैं, फिर भूल जाते हैं. हम जो एक परिवार को देते हैं, समाज को देते हैं, वो 70-80 साल तक जीता रहता है और हर बार जब माँ बाप उसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी IVF स्पेशलिस्ट की याद जरूर करते हैं. दुआ देते हैं. Yes, I hope so. बिल्कुल. Yes. और बहुत सारे अनिरुद्ध होंगे, जैसे थोड़ी बहुत प्रिया घूम रही हैं इस दुनिया में. तो यही जो लॉजिक है, इतनी सुंदरता से सर ने अपने बाकी लाइफ में ट्रांसलेट किया है और उसके पीछे एक ही है जो उनका सोच है. जो शुरुआत है उसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तो जो अंत होगा वो वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे. और ये कॉन्वर्जेशन शायद अभी तक का मेरा सबसे एनरिचिंग और इंस्पायरिंग और ऐसा था कि मैं इसके बारे में और बहुत ज़्यादा सोचती रहूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन हर हेल्थ टॉक्स. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब श्रोताओं को और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप सर से पूछना चाहते हैं. तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक और शायद एपिसोड शूट ज़रूर करूँ यदि आपकी जिज्ञासा है इतनी सारी हमें मिले तो. थैंक यू सो मच. Thank you so much. That was fun.